वॉइस कंफर्म करना मुझे, वॉइस आ रही कि नहीं आ रही है। मेरे लिए जगह रख लेना अभी, इसमें ठाक भी है। वॉइस कंफर्म सीधे यूट्यूब चैनल से वॉइस बताओ आ रही है कि नहीं आ रही है। ज्वाइन नहीं हुआ कोई भी। Good afternoon, everyone. Respected principal sir, teachers, and my dear friends. Today, I welcome you all here to celebrate 3rd National Forensic Day and 53rd Indian Academy of Forensic Medicine Toxicology. The Indian Academy of Forensic Medicine was established in Goa under Society Registration Act of Goa 1860 on 12th May 1970. IAFM is a forensic expert in 1,500 life members, MBBS students, but also do research work to solve medical, legal, and social issues of India. It also publishes its 40th Journal of Indian Academy of Forensic Medicine and Index Journal since 1972 regularly. The scope of journal covers all the aspects of forensic medicine and allied field, research and applied. Dr. Aegis was the first president of this academy. Dr. Pt.J.L.NGMC&H is the current president of this academy and he is with us today, joining us online. Starting with the guest lectures. Let's start with our guest lectures. First session is on the topic preparation of injury reports. So, I call on stage Dr. Pankaj Gupta sir, HOD Medicine, to please guide our first scientific session. My dear students, other delegates, and delegates us online, some from abroad. It's always we feel happy when some C.M.E. of this level occurs in our medical college. As always, Dr. Pradesh is very interested in academics, and I hope this C.M.E. will be academic feast for all of us. So I'll call upon the stage Dr. Pradeep to present his first lecture in scientific session and injury report. Over to you, Dr. Pradeep. Good afternoon, everyone. It's a nice time that we all are here for the third National Forensic Day that is being celebrated. We are getting some delay in the inauguration. That's why I am presenting my lecture on the EG report. So that is the important part for the UG curriculum as well as of the PGs to prepare the EG report. So what are the learning objectives for this EG report? At the end of the discussion, everyone should be able to, being as a UG student or a PG student, will be able to prepare the medical legal PG report. Now there are various types of evidences that are oral evidence and documentary evidence. Oral is any statement which the court permits or the requires to be made before by written or in relation to matter of fact under the inquiry. And documentary evidence, any document produced for inspection of the court in relation to matter of fact under inquiry.
And medical certificate, that is the simplest form of the documentary evidence and that will pertain to facts as sickness, compensation, vaccination and death certificate. All being as a MO, you all are preparing this. That is accepted by the court of law only when issued by registered medical practitioner as per request by the relative. Court may require the attendance of the certifying doctor to testify on all the facts mentioned in the certificate and to be cross-examined if necessary. Death certificate, what are the precautions that should have to be taken into consideration? Person is actually dead, that should have to make it sure. Cause of death in nature, and if the cause of death is due to any unnatural cause or any suspicious death, doctor, but the court should have to be sent or the police should be called for necessary investigation before the body is cremated or disposed of or buried or embalmed. And you should have to inspect the face for the petechial hemorrhages, inspect the scalp and the back of the head for any injury that we will see there, and we should have to examine the body with special reference to the temperature, postmortem lividity and rigor mortis to check whether consistent with alleged time of death as stated by the relatives. Now the medical legal report, that is report prepared by the registered medical practitioners, usually in criminal cases like assault, rape, murder, poisoning, etc. in response to the requisition from the law enforcing agencies, and it is meant for the guidance of the medical or the investigating police officer. It will be produced in the court and subject to cross-examination by the opposing counsel. What are these examples of the medical legal report? That may be injury report, postmortem report, age report, certificate of mental illness, and certificate of any we can say examination of the victim of rape. Now injury report, there is a document containing details of injury as recorded by the medical officer. What are the prerequisites? Medical legal injury case examined without delay after adopting life-saving measures. Valid consent should have to be obtained. 2 identification marks should be noted. Every injury should be noted with length, depth, direction part of the body with the 2 anatomical landmarks. Police information should be sent. Every MLC case should be informed to the police, and this is the duty of the concerned doctor. That we can also say is the medical duty of the doctor to inform the police if the patient absconded or referred to other hospital. The doctor's duty not end here, but he is responsible for preservation of gastric wash, blood or any other sample, and examination of clothes, belongings are very important in case of injuries or in case of bullets or the firearms. The examination of clothes will be of quite helpful for us, and all the observation entered at once in accident register with appropriate sketches and diagrams. There is one term that most of the people or persons will use, that is a pre-MLC medical legal certificate. There is no such term that is described anywhere in forensic medicine, if I say. Relevant information should always be entered in EG report and prepared in the triplicate. 3 EG report or the copy we should have to prepare. When apprehension of death of the injured person or likely death from the effects of injury, then we should have to make the arrangement for recording of the dying declaration or the dying deposition. If unfortunate death of such person will occur, and we do not have to issue the death certificate and send the dead body for medical legal post-mortem examination. Nowadays, few people are also saying that we can dispose of the dead body without referring the person for a post-mortem examination. So there are various things we should have to consider. Now, what is this simple injury? The nature of injury, simple injury, that is neither extensive nor serious, that will heal rapidly without leaving any permanent deformity or disfiguration, or in the simplest word,
that is the injury which is not grievous, or that injury that heals without the scar formation. Now, grievous injury that is described in the section 320 IPC. Now, it will also change in the new constitution that you will see from 1st July onwards. First one is the emasculation. It has got sub types, that is cutting of the penis, castration or causing loss of power of erection due to spinal injury. Second one, permanent privation of sight of the either eye. Third one, permanent privation of hearing of the either ear. Fourth one, privation of any member, part, organ, limb, or the joint. And fifth one, destruction or permanent impeding of power of any member or joint. And sixth, permanent disfiguration of head or face. Seventh one, fracture or dislocation of any bone or tooth. Eighth, any hurt which endanger life or which causes sufferer to be during the space of 20 days in severe bodily pain, or he or she should be unable to follow the daily routines. So just stay in the hospital for 20 days, that will not constitute the person is having the grievous injury. Being as a UG student, you should also have to keep it in mind. If the person is staying for only 20 days, we should not have to label it as a grievous injury. Now, kind of weapon, that may be blunt weapon, sharp weapon, pointed and firearm. Now, age of injury we can describe from the abrasion. Superficial injury involving only the superficial layers of the skin, that is called the abrasion. Now, how it will heal? Bright red that is in color, when that is fresh, after 12 to 24 hours it will turn into red scab. After 2 to 3 days, this will become, the scab will become reddish brown, and after about 4 to 7 days, they will start the new growth of the epithelium, and after about 10 days, the healing will be complete. Now the bruise, that is the infiltration or extravasation of blood into the tissues following rupture of the small vessels. First of all, the bruise is red, that is because of hemoglobin, and that is a fresh bruise we can say. After 1 day, that will turn into blue, that is because of deoxygenated hemoglobin, and after about 2 to 4 days, that will become bluish black or brown, that is because of hemosiderin. After about 5 to 7 days, it will turn green because of hemotidine. After about 7 to 10 days, it will become yellow because of the pigment, that is bilirubin. After 14 to 15 days, the normal color of the skin will appear. Now the clean aseptic wound whose edges are in apposition, or that will heal. Healing occurs without formation of the granulation tissue. Clean aseptic wound whose edges are in apposition, after about 12 hours, the edges will become red and swollen, and after about 24 hours, the scab will be formed, and there is a small wound. After 36 hours, epithelium begins to grow at the edges, and for about 4 to 7 days, epithelialization of the small clean wound will be complete, and after about 1 to 2 weeks, the scar tissue will be formed. In the fractured bones, for that healing will occur, that will be described in detail by Dr. Manik. He will be with us in a 1 or 2 hours. He will describe how this fracture of bones will help to know the time since injury. I won't go into details of that. When the tooth is knocked out, bleeding from the socket will start immediately. After about 1 to 2 days, bleeding stops and the clot is formed. And after about 14 days, clot will obliterate by formation of fibrous tissue. And after about a year, socket is completely filled with gradual new bone formation that will be examined only on the X-ray examination. These are a few things that you can see, the injuries that are there, firearm injury, stab injury. Now the burns, all that they will heal. Redness that will be appear immediately, and the blistering will appear in case of burn after about 2 to 3 hours, and dryness of the exudates in about 12 to 24 hours, and dry brown crust will be formed in 2 to 3 days, and pus will be formed in 2 to 3 days.
separation of the superficial slough, that is after about 1 week, separation of the deep slough after 2 weeks, and granulation tissue will be formed in 3 weeks, and there is scar formation in a week, few weeks to months in the burns you will see. And that is important part, how we should have to give the opinion. Now we should have to write after physical examination of the injuries and investigation, like if we have advised like X-ray, ultrasound, CT scan or any, and the opinion from the concerned specialty, that may be ortho one, surgery, medicine, ENT, from where we have sought the opinion, that all will contain, and we should have to label it and we give the final opinion like this, and the type of injury, that may be simple or grievous one, and the kind of weapon, that may be blunt, sharp, hard, soft, heavy, light, firearm or pointed weapon. On probable duration of the injuries, from various injury we can describe, abrasion, bruise, whatever that will be, and the information regarding any foreign body or belongings or blood sample, that should be packed, sealed and handed over to the concerned police officer. What is the medical legal importance of all these injuries, that we can determine the site of impact and possibility of any internal injury, and we can also identify the object which has caused the injury, and the cause of injury can also be determined, and the direction of injury can also be helpful, and time of injury, and the possibility of any infection or pus formation if that is there, and that is confusion with the burns if that is there, we can see it. Antemortem and postmortem injuries, if we can see, we should have to differentiate between them. And suicidal, accidental or homicidal injuries, if that are there, we should have to mention it, or the police will ask you for this, and then you should, there may also be a court question. Then we should have to describe how this injury will be suicidal, accidental or homicidal. And for Now the session is open for discussion. any question or query from the audience or from the online participants? Ravi sir, do you want to add anything? Dr. Pradeep, nice talk. Two persons have raised hands. Dr. Ashok Chana and Professor Muhammad Maqsood have raised hands. Please, yes. Dr. Ashok Chana sir, please. Hello. Yes sir, yes sir. Dr. Chana sir. Very nice question. I have not made Don't, sir, you I don't have ask not me any made that. questions, you will add the things, because you are teacher of mine. Certainly, that is a very good presentation, a basic presentation which you have presented. And it suits with the concept base. And it is mainly for the MBBS students and for the medical officers. Yes. They can learn and they can make their opinion regarding presentation of injuries, the nature of injury which you have elaborated, and the kind of weapon used to inflict it. It is a nice presentation. Thank you. Thank you sir, thank you. Any query? Professor Muhammad Maqsood have raised a hand. Dr. Masood sir. We are unable to hear you sir. Unmute. Please unmute yourself. Please unmute yourself. Professor Muhammad Maqsood, please unmute yourself.
probably there is some technical difficulty with I think Muhammad Lutfi that definitely is some. not able to. So please, you can go ahead. Okay. Then Masood, we can have got next time we will discuss the thing. Now we are starting with the inauguration. Now please start. Proceeding further, let's get started with the inauguration event. I would like to invite the dignitaries to the dais. Honorable Principal Sir, Dr. S.S. Dogra Sir, Medical Superintendent, Dr. Vipin Thakur Sir, Chief Medical Officer, Dr. Vishal Mahajan Sir, Dr. Pankaj Gupta Sir, Organizing Secretary, HOD Medicine, Dr. Pradeep Singh Sir, Organizing Chairman, HOD Forensic Medicine, Dr. Manik Sehgal Sir, Co-Organizing Secretary, HOD Orthopedics. Now, I would like to request the dignitaries to please inaugurate the event with lighting of the lamp. एक कोई भी लड़की आ जाओ, any girl, come and ठीक है पीछे आ जाओ, दांत लगा के साफ सुथरा साफ इधर है ना, तू इधर खड़ी फोटो ले आना, इधर क्या नाम है तेरा? सर एक सामने प्राइस Thank you so much, sir. Now I request everyone to please stand on your respective places for national song.
Now I call on the stage volunteers of the batch 2021 to please felicitate our guests. Now it's time for the release of the journal, that is, International Journal of Ethics, Trauma and Victimology. Moving forward, now I would like to invite Dr. Pradeep Singh, Sir, Organizing Chairman, to please welcome the audience. Good afternoon, everyone. I am thankful and welcome you all, especially Principal Sir, Dora Sir, and C.M.E. Sir, and MS Sir, Vipin Thakur, HOD Medicine, and my close lecturer, Garmani Sagar, and very closely say that I am microbiology and anatomy of participation in my department role. So I welcome you all for this C.M.E. What is the purpose of this C.M.E? Why we are celebrating it? So our National Science Day that was celebrated on 12th May of this month. That was also a Mother's Day. So due to some problems, we won't be able to do it on the 12th May. So that's why we are celebrating on 20th of May. So this C.M.E. has been named or given the name as a kids prom. Why so? Because nowadays the students, children, and we can say the girls especially, they are taking the drugs and they are mostly coming to the emergency nowadays. Usually we are finding here in our casualty or the emergency of our MBBS students, or we can say our police, who will become our police after a few years. If you will lose the heart, we are very disheartened. So that's why this C.M.E. is solely dedicated and that will be celebrated on your behalf. So I will say, hip hip hooray for all of you and want you to stay in the healthy mentally and physically. So I will welcome you all. I want this C.M.E. to be a successful, and I will pray to the God that He will keep us healthy and physically and mentally. Thank you all. Thank you so much, sir. Now I would like to invite our principal, sir, to say a few words. Good afternoon, everybody. I expected David is sitting on the right
who have given their valuable time to organize this wonderful CME. CME means continuing medical education. This is the academic feast is going to impart you very good knowledge about this very important subject, forensic medicine and toxicology. This is very important subject, and I welcome all the delegates from our college, our state, from India and abroad. And with these words, I wish this CME to be successful. Thank you very much and congratulations to everyone. Thank you so much, sir, for your kind words. Now, I would like to invite Dr. Pankaj Gupta, sir, to please say a few words. Actually, vote of thanks was appreciated, and first of all, at the outset, I like to welcome all the delegates which have joined us online, all the who's and who's in forensic medicine. I'd like to welcome our worthy principal, Professor S.S. Dogra, CMO sir, Dr. Vishal Mahajan, our MS, Dr. Vipin Dogra, Professor Pradeep, and HOD Artho, Dr. Manik, our faculty members, and all the students, most importantly students. Good afternoon, and I welcome you all in this occasion of academic feast. And I think this academic, as Dr. Pradeep is always interested in academics, I think this will add to his leader and ours also. And I think in another 2 to 3 hours, you will be given the 155. Can you start? Actually, somebody from online has not unmuted his So, thank you, and over to you. Thank you so much, sir, for your kind words. With this, we close the inauguration ceremony and start with the guest lecture. So the next lecture is on the topic, time since injury from fracture healing. So I would like to call on the stage Dr. Manik Saigal, sir, HOD Orthopedics. Everyone wait for a few minutes that we can make the required changes. Please wait for a few minutes.
Chairperson Dr. Manik Saigal Sir, HOD Orthopedics, to please chair our next session on the topic OPC poisoning. At the outset, I'd like to thank Professor Patel for inviting me to speak in front of this august gathering. Our online guests and stalwarts of forensic medicine, our respected chairperson, faculty members, and students. Good afternoon. Topic today, given to me, assigned to me is organopostular structure. In another 35 to 40 minutes, I shall be discussing about one of the most common pesticide poisoning in India. Not only in India but in Asia also. And which is causing about 2 lakh deaths per year in Asia. And you can see the numbers. 10 to 40% of poisoning in India is because of obesity. So see the numbers. This is major clinical public health problem. And see the suicidal poisoning rate, 10 to 44%. So this is a huge problem in India. I think pre-final students are here. When you will become interns and when you will become our colleagues, another 1 year or 2 years, when you are sitting in in emergency, you will be confronted with many patients. Very important क्या करना है और उससे भी important क्या नहीं करना है. So that is very important. I will tell you क्या करना है, but जो नहीं करना है वो ज़्यादा important है. So I will tell you that. But before I start this, I have a confession. Very less randomized controlled trials have been done in this field. All are based on some observations, trials which are not randomized controlled, but still, what is the consensus? I will tell you that next. So these are used as pesticides, herbicides, and nerve agents as chemical warfare. So chemical warfare. So in chemical warfare, we have some common gases like soman, sarin, carbon, and VX. And then we have some pesticides. You must have heard the names of these pesticides. Dragonid, malathion, नाम सुनते ही डर लग जाता है. आप इमरजेंसी में बैठे हैं तो जब ये नाम सुनते हैं पेशेंट को लेके आते हैं कहते हैं malathion का, paraquat का, malathion का, you will get really it is a very difficult condition. Then you can have herbicides which are also organophosphorus. Next one. To start with, I will tell you a brief history of organophosphorus. German knew their effect as early as 1930. They used it as neurotoxin in military. 1930, and then first instance of terrorist war was in 1994 when an extremist from Japan used it as terrorist agent, and that was VX. As early as 97. Murder of King John, which occurred in Malaysian airport, and he is a brother of he was a brother of North Korean monarch, and he murdered him in Red. And as early as 2018, there was double attempt. Those were spy of both England and Russia, and they were poisoned by this novichok nowadays in England, but they both survived. So this is just to take because this was the history of obesity. Next one.
What is pathophysiology? How they act? So organophosphorus, what they do? You must be, your students, you must be you must be knowing about this pharmacology. How this OPC insecticide acts? They inhibit acetylcholinesterase. And what does acetylcholinesterase do? It degrades acetylcholine. When acetylcholine is not degraded, what happens? There is excessive stimulation of all the acetylcholine receptors. Nicotinic, muscarinic, in CNS, in PNS, in ganglions, everything is overstimulated. And these are the effects, these nicotinic and muscarinic effects are the cause of problem with the patients. Next one. So we are in conference, so toxokinetics is very important in these patients. So why toxokinetics is important? First, they can be tested, organophosphorus can be tested. They can absorb to skin, to eyes, or they are only. All the methods, but inhalation is the fastest method of absorption. And then most of the organophosphorus compounds that are lipophilic. They like fat, and they are absorbed in fat. The bad thing is when they are absorbed in fat, they can be released after some time, maybe after 3 days, 4 days. That is the reason for recurrent these symptoms after 2 days, 3 days. That is why we can have intermediate syndromes and other syndromes, or some delayed syndromes. Next. Normally we say the thin patients, they don't tolerate the things, but obese patient and those who has more BMI, they tolerate the things better. But in this case, the patient who is more obese, who has BMI more than 25, he has more adipose tissue, and he has more chances of dying rather than a thin patient. Next. One important concept in organophosphorus spiral is aging. Why aging is important? Because the antidote which we have for organophosphorus occurs only before the aging of enzymes occurs. If aging has already occurred, with this the antidote which is PAM, this cannot be given, and it is not helpful. So we have to give the antidote before the aging occurs. What is basically aging? Aging is actually organophosphorus acts with acetylcholinesterase reversibly, but after some time the bond becomes irreversible, and that is aging. So we should know the aging of all the organophosphorus spiral so that we can give PAM very initially. If we give PAM in a patient who has already in a patient who has organophosphorus aging are already occurred, there is no benefit. That's it. So when a patient comes to you, endeavor to see what is the first step you have to do. You have to know the specific compound and timing of exposure. अगर थोड़ा जल्दी है exposure, then you can do many things. You can even gastric lavage, you can do the lavage. But अगर 3 घंटे बाद आया, there is no benefit of lavage. Then very important is ask the patients or attendants to get the container. Container में सारी information लिखी हो. ऐसे हमें पता नहीं लगेगा. Timing of onset, रूट क्या है, that will tell you about the symptoms कैसे होंगे और कितनी देर रहेंगे और that's now coming to all important, what are the symptoms? पहले symptoms को हम divide करेंगे on the basis of onset of time. Is it acute? Acutely we have cholinergic cholinergic symptoms. Acutely, all the cholinergic symptoms are there. Then we have delayed. I told you because they are absorbed in fat and they are slowly released, so you can have delayed symptoms. In which you can have intermediate syndrome or you can have which is delayed organophosphorus encephalopathy. And then you can have late symptoms more than 2 weeks. So बड़ी बार हम गलती करते हैं organophosphorus patient पे admit किया 6 घंटे देखा 7 घंटे देखा patient is alright to discharge कर दिया. Don't discharge the patient before 96 hours. Follow this golden rule. Because patient can have intermediate syndrome. Intermediate syndrome होगा muscle weakness, so patient has respiratory failure and patient dies. Patient को आपने घर भेज दिया, तो patient का रात घर में मर जाएगा. So don't do that. Most common symptoms are muscarinic, followed by CNS symptoms and nicotinic. And what are muscarinic, CNS and nicotinic symptoms? I will tell you. So I
am not very fond of genomics, but students, for you, this is a genomics you should remember for muscarinic signs and symptoms. Dumbbells, this is genomics for muscarinic receptor overstimulation. D for defecation, diaphoresis, urination, meiosis, bronchospasm, emesis, lacrimation, salivation. So remember this once for all. Next one. And they say the patient who has muscarinic receptor overactivity, they groan in their own secretion. इतनी secretions होती हैं, bronchoria, salivation, they groan in their own secretion. So this is a typical word we use in medicine ward when patient has severe organophosphorus. Next one. Then if patient has muscarinic receptor overstimulation बढ़ जाए, so these are the genomics. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Just Thursday को मैं ध्यान रखो काफी सारे. Monday means fibrosis, Tuesday means tachycardia, Wednesday weakness, Thursday if you are hypertensive you feel thirst. So that is how you can remember it. And then in Friday you have fascinations. So these are nicotinic receptor overstimulation features. Next one. Then you have CNS signs and symptoms. You can have confusion, agitation, coma, and respiratory failure. Next one. Then you have additional symptoms. There are so many symptoms. Then you have symptoms due to overstimulation of nicotinic receptors at neuromuscular junction, because these receptors are also present in neuromuscular junction. So you can have muscle weakness, paralysis, and fasciculations. So all these symptoms, if patient has this means he has overstimulation of nicotinic or muscular receptor overactivity. Next one. And what is the most common cause of death in these patients? Why this patient dies? So first is bronchoconstriction, and the most common cause of death is respiratory failure. And what is the cause of respiratory failure? One is bronchoconstriction and bronchoria because of muscarinic receptor overactivity. Second is central respiratory depression because of CNS overactivity. Then third is weakness and paralysis of respiratory muscles. That is because of NMJ, nicotinic receptor activity, overactivity in neuromuscular junction. So all they contribute to respiratory failure, and patient dies because of respiratory failure. So the point is, whenever you are dealing with such patient, always take care of A first. A, B, C, airway. Unless you give oxygen, don't give anything, don't give atropine, don't give pen. First of all, you have to give oxygen. Next one. Evaluation. Patient आपके पास आएगा, how you will evaluate? First is most important is before lab confirmation, because lab का report आएगी तब तक अगर आप wait करोगे patient will die. So clinical suspicion should be high. If you think patient is having meiosis, tachycardia, diaphoresis, Alfred showing, always start treating the patient before even you get the lab information. And then patient present कैसे करेगा? Usually he will have garlic or petroleum water. उसको जैसे garlic या petroleum water होगी वैसे उसको आएगी, आप उससे आएगी. So these are the points which can tell you that patient may be having organophosphorus. अगर आपको लगता है कि organophosphorus हो सकती है, but you are not confirmed, क्या करेंगे? You can give trial of atropine. एक computer trial atropine करना 0.6 milligram, which is equivalent to 1 ml, 1 ml, 1 vial. Patient will have diabetic symptoms. Symptoms will become better. So अगर symptoms better हो रहे हैं, even with 1 vial of atropine, this means you are dealing with organophosphorus. because report तो कहीं आएगी नहीं, हम टेस्ट करेंगे वो तो 3 दिन बाद आएगी. It is not available in the unit data. So clinical suspicion is first. Next. Investigations में हम can do RBC diagnosis activity, which is if the activity of those that enzyme is less than 50%, that will tell you that patient has significant organophosphorus. Next one. Other routine investigation has to be done. Important is ABT has to be done because we need oxygenation of that patient. Because oxygenation comes only we have to intubate that patient. Next one. ECG is very important, which will tell you about bradycardia. Then treatment क्या करेंगे? सबसे पहले we have to protect ourselves. ये always golden rule याद रखना. Dear students, before treating patient, you should protect yourself. You have to contaminate the patient, but you have to put PP. You have to, because self-contamination से बचाना है. Don't use जो हमारे normal drugs मिलते हैं हमें वो emergency में. They can, this organophosphorus can pass through them. So you need neoprene gloves. So
These drugs should be given in emergency and not routine drugs. Then you have to completely contaminate the patient. उसको soap and water से wash करना है, अच्छी तरह wash करना है उसको. All the secretions like vomit, diarrhea, they all contain protein. So you have to take care of that. Remove all these proteins. You have to wash his or her hair अच्छी तरह धोना है. अगर आप नहीं कर सकते because hair can absorb lipophilic organophosphorus for long time. उसका hair cut कर सकते हैं. So you have to do it. Next one. And this is more important. Although decontaminating the patient is essential, but it should not delay the treatment of the patient. Decontaminate करो पर उसके कारण आप decontaminate के चक्कर में atropine आप 2 घंटे नहीं करते. Don't do that. Next one. Any student who can tell me, does GI decontamination help? Yeah. Can gastric lavage help in this patient? Don't listen to that. Students. Without listening. So, the evidence, the limited evidence what we have, it shows that no benefit any form of gastric contamination of these patients. Don't do it at the expense of giving antidote. Patient 4 घंटे बाद आया और आप गैस्ट्रिक lavage के चक्कर में उसको बाकी ट्रीटमेंट छोड़ दें. Don't do that. अगर patient, the guidelines are that if patient comes to you within 1 hour only, then you have to give gastric lavage. Why? Because these organophosphorus are dropped so fast within minutes they get absorbed. उसके बाद कोई फायदा नहीं होगा. Next one. So करना भी है gastric decontamination. तो क्या करना है आपने? पहले ऑक्सीजन, एट्रोपिन और पैन देना और उसके बाद फिर decontamination करना. उससे पहले नहीं करना. Next one. So I already told you within 1 hour if you can do, then do. After taking the vitamin, otherwise don't do it. Next one. फोर्स को भी पेशेंट को अटेंडेंट लाते हैं कि उल्टियां करवाते हैं जबरदस्ती दवा खिलाते हैं उल्टी करें. You should do it. Yes or no? Don't do forced emesis because it is very bad in this patient. Because patient can escalate to other problems. Next. Activated charcoal का क्या हो गया? No evidence of any activated charcoal. Otherwise, in vitro बाहर देखने तो charcoal can absorb organophosphorus, but जो studies हुई है, so it doesn't absorb any has no benefit on this. Next. कभी-कभी आप बड़े aggressive हो जाएंगे interns, तो नए डॉक्टर बनेंगे तो will give more to more resuscitation. Don't get this. Complete no. Why? Because you can get contaminated. So no more to more resuscitation. Next. No, अगर जो नहीं ये नहीं करना क्या है? क्वेश्चन इस करना क्या है? तो 3 चीजें हैं हमारे पास. ऑक्सीजन, एट्रोपिन, पैन और कभी-कभी हमारे पास डायज़ोपाम कैन बी. So, and the first step is airway control because this is the thing which will kill the patient most of the time. So, respiratory failure is the most common cause of death in this patient. So, you have to take care of respiration. Atropine. उसके बाद atropine is the main treatment. It is antimuscarinic and it competes with the steroid choline-4 muscarinic receptor binding. So, जो receptor जहाँ पे ओपीने लगना था वो उस पे atropine लगेगा. तो इसलिए patient will get next one. ओवल क्या है? Atropine देनी है. कितनी देनी है और कब तक देनी है? क्यों देनी है? The goal is atropination. What is atropination? Atropination dry skin and mucosa, decreased bowel sounds, tachycardia, no bronchospasm, reduced secretion of iris. This is our goal. अगर ये goal achieve होता है तब तक हमने नहीं होता तब तक हमने देनी है. जब achieve हो गया we will stop. Next. Antidote क्या है? Antidote is oxygen. That is 2 pan-isopryllyl oxygen. ये कैसे एक्ट करता है? How it acts? It reactivates phosphorylated acetylcholine respiration उसको reactivate करेगा. By binding to organophosphorus. लेकिन इसके very important things, 2 important things हैं इसमें जो हमने याद रखना. Its evidence regarding the use of oxygen is controversial. सबसे इम्पोर्टेंट चीज है it has to be given before aging. सबका हमें aging का पता नहीं है किस टाइम एजिंग होती है, क्योंकि एजिंग जल्दी हो जाती है, एजिंग लेट होती है. organophosphorus होता है. अगर एजिंग हो गई है तो no benefit. Sometimes you can have carbonate piling that is similar to organophosphorus piling. सब कुछ similarity होगी. But the studies, limited studies which have been done, they say the carbonate piling PAM is contraindicated.
अनलेस कि आपको बस क्लियर है कि आर्गेनो फास्फोरस से आप प्रॉब्लम नहीं है, तभी आपने पैन देना, अदरवाइज पैन कैन कॉज मोर हार्म देन दैट. सो दिस टू वन थिंग शुड बी. देन अगर सीजर्स हो रहे you can give benzodiazepine, but some studies have shown that benzodiazepine can prevent the neuropathic delayed complications in neuropathy. It can prevent it, but practically we give benzodiazepines only when patient is having seizures, otherwise we don't give. There are some newer modalities like hemodialysis, hemofiltration, but कुछ studies कहते हैं कि we can use, but there is a limited data, we cannot use it. And common sense says क्योंकि अगर इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लिपोफिलिक होगा, उसमें एचबी और एचएफ ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे. सो नॉट मच इन फेवर ऑफ दैट. नाउ आप इमरजेंसी में बैठे हैं, 1 2 3 क्या क्या करना है आपने, ये आपको पता होना चाहिए. विदाउट मिसिंग वर्ड, पहला क्या करना, दूसरा क्या करना, तीसरा करना, ये हर इमरजेंसी में है. सो डियर स्टूडेंट्स, योर गुड इन टर्म्स, सबसे पहले चेक एबीसी. Here is always number 1. Left middle position में बिठाना पेशेंट को. And why? Because उससे एक्सप्रेशन कम होगी. High flow oxygen, start high flow oxygen. Then intubate the patient. अगर तो क्या इंडिकेशन है इंटुबेशन की, IV करेंगे. उसके बाद IV लाइन लगानी है और 1 to 3 मिलीग्राम एट्रोपिन, 1 एम्पूल से लेकर 3 एम्पूल तक एट्रोपिन स्टैट दे देना है IV. ठीक है, नेक्स्ट. लेकिन एट्रोपिन देने से पहले हमने उसका हार्ट रेट, पल्स, चेस्ट देखनी है कि चेस्ट में क्रैम्स है या नहीं, वो पिंपल्स डालेंगे, पिंपल्स कैसे हैं. सो उसके बाद हमने ऑक्सीजन भी दे दी, उसके बाद एट्रोपिन भी दे दी, उसके बाद हमने नॉर्मल साइन देना है. और टारगेट क्या है नॉर्मल साइन का, ज्यादा फ्लूइड नहीं देना, बिकॉज़ ऑलरेडी इज हैविंग मोर फ्लूइड इन लंग्स देन अदर. हमने नॉर्मल साइन, टारगेट क्या है, systolic BP more than 80 and urine output more than 0.5 ml per kg per hour. ये टारगेट याद रखना. उसके बाद जब ये कर दिया, ऑक्सीजन, एट्रोपिन, नॉर्मल साइन, उसके बाद पैम देना. पैम 2 grams IV over 30 minutes. ये कहीं बोलस में नहीं देना, बोलस दे दोगे तो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा पेशेंट को. डोंट गिव बोलस. ऑलवेज गिव 30 minutes infusion in normal saline followed by 1 gram per hour infusion. ओके, नेक्स्ट. उसके बाद ऑक्सीजन दे दिया आपने, एट्रोपिन दे दी, नॉर्मल साइन दे दिया, पैम दे दिया. उसके बाद एवरी 5 मिनट्स आपने सारा हार्ट रेट, बीपी, पल्स एंड चेस्ट देखनी है, चेस्ट में क्रैम्स है या नहीं, एवरी 5 मिनट्स. हर 5 मिनट के बाद अगर आपको लगता है कि जो आप चाहिए कि हार्ट रेट इंक्रीज नहीं हुआ या बीपी इंक्रीज नहीं हुआ या चेस्ट क्लियर नहीं हुई, यू हैव टू डबल द डोज ऑफ एट्रोपिन. यू मे नीड समटाइम्स 100 मिली पूरा का पूरा एट्रोपिन जो नीचे हमारे कैजुअलिटी में होता है, हमारा एक ही पेशेंट में हंड्रेड्स ऑफ एम्पूल्स, वायर्स ऑफ एम्पूल्स लग जाते हैं. सो डोंट शाय, जितना लगता है लगने दो. आपने हर 5 मिनट बाद, बिकॉज़ दिस इज द मेन ट्रीटमेंट, हर 5 मिनट बाद आपने एट्रोपिन की डोज डबल करनी है और ये टारगेट देनी है. कब तक करना है, नेक्स्ट ये टारगेट है, तब तक हमें एट्रोपिन देनी है. हर 5 मिनट बाद डोज डबल कर देंगे. पहले हमने 1 एम्पूल या 2 एम्पूल से शुरू किया, 5 मिनट बाद 4 एम्पूल, अगले 5 मिनट बाद 10 एम्पूल, ऐसे बढ़ते रहेंगे. एंड तब तक देना है जब तक हार्ट रेट आपको मोर देन 80 ना हुआ, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 80 ना हुआ और चेस्ट क्लियर नहीं. ये हो गया तो देन यू हैव टू स्टॉप करना है और एट्रोपिन इन्फ्यूजन शुरू करना है. बोलस दे रहे थे, वो बोलस बंद और जब ये टारगेट हो गया आपने इन्फ्यूजन शुरू करना. आप इन्फ्यूजन कितना दें, समझ लो हमने 100 मिलीग्राम तक टोटल हमने डोज दे दी, उसका 10 to 20% ले रहे हैं उसका, वो पार्ट ऑफ इन्फ्यूजन है. समझ आ गई? समझ लो हम 5 पहला हमने दिया 1 एम्पूल, फिर 5 के बाद 2 एम्पूल, ऐसे करते करते हम टोटल हमने 100 मिलीग्राम दे दी. उसके बाद जब हमारा टारगेट अचीव हो गया, उसके बाद इन्फ्यूजन रेट शुरू करना है हमें 10% का, 10 to 20% का है, मींस 10 मिलीग्राम और 20 मिलीग्राम पर आवर इन्फ्यूजन शुरू करना. और इन्फ्यूजन कंटिन्यू रखना है जब तक नेक्स्ट. ठीक है, और पैम कब तक देना है, पैम तब तक देना है जब तक एट्रोपिन हमने बंद किए हुए 12 घंटे ना हो जाए और या पेशेंट एक्सपीरियंस हो. इन दोनों कंडीशंस तब तक हमने पैम देना. नेक्स्ट. अब मैंने बताया पेशेंट को एवरेज भी देखना है, पेशेंट को ऑक्सीजन तो दी, बट उसके बावजूद भी उसका PaO2 लेस है, टाइल वॉल्यूम कम है, वाइट एसिड कम है, तो यू हैव टू डू द पेशेंट. सो these are the indications of intubation. Tidal volume less than 5,
vital capacity less than 50, happening spells PO2 less than 60 and FiO2 more than, on average more than 60. So these are the reasons. So अगर ये ऐसा लगे तो आगे उधर से friends and to the mechanical next one. Adequate sedation is important. Next one. And we have to monitor regularly for progressive crisis. because मैंने बोला कि जो फैट में अब्जॉर्ब हो जाएगा आइडेनोफॉस्फोरस वो उसके दूसरे दिन वहां से रिलीज होगा फिर सिम्टम शुरू हो जाएगा इससे पहले हमें डिस्चार्ज नहीं करना नेक्स्ट वन सो डिलेड कॉम्प्लिकेशंस वेरी सेंसिटिव दैट्स इंटरमीडिएट सिंड्रोम क्या होता है इंटरमीडिएट सिंड्रोम तो हमने सिर्फ एक्यूट कोरोनरी क्राइसिस को नहीं देखना है हमने इंटरमीडिएट सिंड्रोम को भी देखना है और एंड दैट इज समटाइम्स मोर ड्रेडफुल देन एक्यूट क्राइसिस इसमें यू विल हैव मसल वीकनेस बट देयर विल बी नो कोरोनरी क्राइसिस देयर विल बी नो साइंस ऑफ नो fasciculations and you can have brain nerve palsy and patient usually goes to respiratory failure. Sometimes it can come without respiratory failure, most of the time it comes without respiratory failure. And typically patient remains conscious. Patient does not lose consciousness. So हमने इसको देखना कैसे पता लगेगा कि हमें इंटरमीडिएट सिंड्रोम हो रहा है नहीं. So always check the neck flexion. Patient को कहना है कि आपने गर्दन उठानी है उसको ऊपर से प्रेस करना दबाना है. That is the first indication because the neck flexion is the first muscle which will be involved in intermediate syndrome. So हमने सबसे पहले उसकी neck अगर लगा कि neck muscles neck flexors की weakness हो रही है, this means उसको intermediate syndrome होने वाला है. You have to be very careful. Next. So you have to follow this rule. Never ever discharge the patient before 96 hours. आपको patient का रिपोर्ट ठीक है, आपने एक दिन देखा, दो दिन देखा, सब ठीक है, तब भी discharge नहीं करना. 96 hours because legally medically आप कर सकते हैं कि आपने 96 hours से पहले discharge कर दिया. Next. Then there are two major complications. क्या होते हैं? One is what is called as OPID, which is organophosphorus induced delayed polymerization. So ये delayed complication आ सकती है. Patient can have cramping in the lower limbs, paresthesias, loss of DPRs, सारे lower neuron signs आपको मैंने बताया हुआ है. So they can have paresthesias, next one. Then patient can have chronic organophosphorus induced neuropsychiatric disorder. इसमें late complication होती है. Maybe after 2 weeks, patient can have neuropsychiatric disorders like confusion, memory, impairment with psychosis, irritability, and Parkinson-like symptoms. So all these symptoms. So we have to take care of not only acute symptoms, but intermediate symptoms, delayed symptoms, and late symptoms. So सारे देखने ऐसे हमने acute उसको भी करके देख ही देना. Next. So the students are there, all the delegates. So these are the carrying message, especially for the students. This is the most common specific question in Nigeria. It is suspicion is important. हमारे पास जब टेस्ट नहीं होंगे तो suspicion नहीं करना है. और अगर सस्पेक्ट किया है तो we have to start treatment. Just give one introduction to the patient at the background of the disease. You are dealing with the time. Next, you know the mechanism. It inhibits ACE, acetylcholinesterase inhibit करता है, and because of acetylcholinesterase inhibition, you get acetylcholine overactivity हो जाती है. मतलब acetylcholine की overactivity होगी, you will have all the nicotinic muscarinic receptor overstimulation. सारे सिस्टम उसी के कारण होंगे. For the treatment, first oxygen, atropine, and third is PAM. But in this order, not PAM, atropine, first oxygen. अगर आपने atropine पहले दी, oxygen नहीं दी, patient can have arrhythmias. So oxygen पहले ख्याल रखना, उसके बाद atropine देना है हमने. Atropine में हमने, I told you, you can give patient B in hundreds of vials, and you have to start. You have to double the dose after every 5 minutes, and then infusion date you have to give 10 to 20% of the total dose. And then PAM किसमें नहीं देना है. PAM एक तो कार्बन की पाइप में होगी, totally contraindicated. Patient can have more harm than better. And then अगर एज हो गया, एजिंग हो गई है तब भी PAM नहीं है. Thank you. That's all from my side. So any comments or any questions or welcome. Any questions? आपको बिल्कुल समझ नहीं आई या सारी समझ आ गई. मेरे को क्वेश्चन क्या है कि so if there are 2 questions, thank you. Hello. Hello. Sir. Hello. Am I audible? Yeah, you are right. Right. Thank you. Sir,
elaborated very well. My query is regarding the laboratory levels of cholecystectosis in relation to the heterogonalization, besides twins or finite. Sir, most commonly we do lab investigations. That is, we can do RBC protostase or butyryl protostase. But they have seen butyryl protostase levels. They don't tell exactly what is the amount of poisoning we have. So RBC protostase, because acetyl protostase is present in RBC also. So RBC protostase activity is very important, and we send it first. We send the sample. Sample has to be sent. We have to send it in plastic bottles, and we have to send it immediately without getting bombed. So if the level is less than 50%, that means it is significant organophosphorus. Thank you. Thank you. Any other questions? Thank you. Thank you so much, sir. Now I request Chairperson Dr. Manik Sehgal, sir, to please give certificate to Dr. Pankaj Gupta. Now I request Dr. Surinder Pal, sir, Equity Pathology, to please give certificate to Dr. Manik. Moving on to our next session. And the topic for the session is time self-injury from fracture healing by Dr. Manik Sehgal, sir. I would like to invite to the dais Dr. Vandana ma'am, HOD Radiology, to please chair the session. Chairpersons joining us online are Dr. Sangeet, sir from Nahan, and Dr. Anil Garg from Sonika. Very good afternoon to all of you present here. At the foremost, I would like to congratulate Pradeep sir and for showing us the path. I guess what I always believe, when you are in a medical college, the academics takes the topmost position. So just within a gap of 1.5 years after organizing a national conference in this college, we are having a national level C.M.E. So hats off to sir and his academic persona. Such activities bring the medical college, the name of our college, onto the national level. So thank you to all of, lots of congratulations to sir. Secondly, among the faculty, I would like to say that I feel myself at home. Why? In the panel of traditionalists, I have Dr. Chalna sir, who was my internal examiner when I was pursuing MBBS. Dr. S.P. sir was my internal examiner when I was pursuing pathology there. Dr. Gargi sir, sitting in the panel, was principal of the medical college when I was doing MBBS from GMC Amritsar. Myself is a GMC alumni from 2005 batch. So I feel honored to be to present a lecture in front of my teachers, and I hope in the coming years you are standing on my place and doing the same thing. So topic assigned to me fracture healing, medical legal importance,
and antemortem and postmortem differentiation of the fracture. So, anatomy of the bones, you must all be very familiar. The stages of fracture healing, the type of fracture healing and its medical legal importance is what we will be talking about. Break in the continuity of the bone is called as fracture. It can only be a break in the continuity of periosteum also, which we see in children and kids, and it's called as a adolescent fracture or a buckling fracture. So any break in the continuity of the bone, it leads to fracture, and immediately when there is an event, when there is a fracture, the bone starts healing. Healing starts immediately and the modeling continues for years and years. So we are very familiar with the parts of the long bones. We have epiphysis, metaphysis, diaphysis, then again metaphysis and epiphysis. The bone consists of mineralized bone matrix. We have osteoblast, osteocytes, osteoblast, periosteum, endosteum, medullary cavity and bone marrow. So these are the parts of the bone. So fracture healing, we should be very much aware of it, that it should be a direct fracture healing or an indirect fracture healing. The direct fracture healing is called as a primary fracture healing. It occurs when the ends of the bone are in opposition with each other. In such sort of fracture healing, the callus formation doesn't appear on the X-ray. It occurs directly through the intramembranous transport. The secondary bone healing which occurs, it occurs through the formation of the callus. This is mostly seen when there is some mobility present around the fracture site. So, if there is a definitive fixation of a fracture, like rigid fixation of the fracture, there won't be any callus formation. In cases where the fracture fixation is not rigid, there is some mobility or some hydromotion present, we will see a callus formation. So, stages of fracture healing, this is very important. The first stage, like any other pathology, any physiology, we see whenever there is a bacterial infection, whenever there is a virus infection, the bodyguards, the macrophages, the WBCs reach there. Similarly, when there is a bone fracture, there is hematoma formation. In the hematoma stage, we have colony, granulocyte, monocyte, colony stimulating factors. We have used them converted into osteoblast and osteoclast, which further lead to the formation of the bone. So there is stage of hematoma formation, stage of granulation tissue formation, which takes from 2 weeks. The callus formation stage comes around 2 to 3 weeks. The callus formation, then there is a consolidation of the callus. The callus which is being formed by the osteoblast, it consolidates. This is for 3 to 6 weeks. The longest stage is stage of remodeling. That takes from year and year. The remodeling means जो bone की parent shape थी, वो parent shape वापस कब आएगी, आएगी भी नहीं आएगी. That is the stage of remodeling. In pediatric age group, if you have fractures, the bone gets completely remodeled. But in adults, the remodeling takes sometimes infinite time. So the stage 1 is hematoma formation. Whenever there is bleeding vessels, there is clotted blood, and the hematoma forms of the fracture site. This hematoma is very important to us as an orthopedic surgeon and also for the patient, because this hematoma is the source of future bone union. The bone union. So we always want to preserve this hematoma. That is why nowadays the modalities are coming of close reductions of fractures. We don't want to open up the fracture site. We are using more and more of the X-ray machines, C.M.E. in our patient theaters so as to preserve this hematoma. So this hematoma leads to the bone union in the future time. So if we can see a histopathology examination, if there is a broken bone, we see here, the broken bone along with blood flows. So in inflammation and cellular similarly to bacterial viral infection में होता है, the cells start surrounding the pathology. Similarly here, there is a proliferation and differentiation of the cells. So granulocytes, colony stimulating factors, there are macrophages which get converted into osteoblasts, osteocytes, chondroblasts and chondrocytes for the production of the bone and the production of the cartilage. These factors, tissue growth factor beta and latent growth factor, they are very important for the formation of the callus. So this is chondrogenesis and inflammatory response usually seen around a week or 7 days from the fracture. So the callus formation, earlier, सबसे पहले there will be a fibrocartilaginous callus. It will be a soft callus. So if we are protecting the fracture end and if we are saving the fracture end, this fibrocartilaginous callus will then convert it into a bony callus. So this is the calcification of the callus. This is arrow of the. So the bone cells
have started depositing around the fracture site. And then, if everything goes fine, there is a consolidation phase. As you have seen in the anatomy of the bone, there is a regular lamina, and then there is aversion canal and movement canal. So जब movement और aversion canal बन जाती है, उसको हम natural bone बोलते हैं. उससे पहले जो bone होती है, that is called as lamellar bone. So this is the trabecular pattern, which is a pairing, and is continues for 2 to 3 months later. So now we can see the sky view area. So most of the bone callus is composed of a cartilage. The remodeling takes place. The bone remodeling takes place. Activation, resorption, reversal formation, and twisting. The remodeling means the body wants to have a bone on its parent shape. Okay. So this is now you can see no blue area. That is no cartilage. It's all pink. That is the calcified bone. The complications of the fracture, anti-duty है, 2 चीजें होंगी, या तो जुड़ेगी या पेडिंग होगी. So it is malunion or non-union. These are the complications of the fracture. So main importance is medico-legal importance. We orthopedicians are glorified carpenters. So you must have carpenters in your home. जो दरवाजे बनाते हैं, जो गाटे लगाते हैं, तो दरवाजों में कई बार लंबे छोटे रह जाते हैं, कई बार दोस्ती ज़्यादा आ जाती है, जो गाटे कई बार टूट जाते हैं. Similar thing is this. But nowadays we are very much prone to the medical aspects because ऑर्थो एक ऐसी ब्रांच है, अगले दिन पेशेंट के सामने एक्सरे होता है, तो एक्सरे में सब साफ साफ नजर आ जाता है उसको किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ती. पेशेंट की अपनी टांग है, टेढ़ी हुई है, सीधी हुई है, वो खुद बता देगा, लंबी रहेगी है, छोटी रहेगी है, वो खुद बता देगा. So this aspect of the orthopedics they make us prone to many of the medical cases. मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. After my SSC, I went to one of the best surgeons, orthoplasty surgeon, for my fellowship in hip replacement surgery. So उनकी OPD में बैठे थे, around 20 to 20 years old male. The neck femur का फ्रैक्चर था, तो उन्होंने स्क्रू डाल के फिक्स किया हुआ था, very weak fracture, और कोई इशू नहीं है, फ्रैक्चर पूरा हिला है. Implant is also common, and he came with around 3 to 4%. He said we are carrying you to court. Why? सर मेरी जो टांग है वो 1 सेंटीमीटर छोटी है, मैं लिंक करता हूँ, मेरे घर में को नजर आता है, मेरी शादी नहीं हो रही है. तो दिस वाज द केस. बट इन चीजों में आपको क्या बचाएगा? कम्युनिकेशन विद द पेशेंट, सर्जरी से पहले कॉम्प्लिकेशंस का बताना, कॉम्प्लिकेशंस का डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है. तो उन्होंने सर ने फाइल नहीं करवाई, फाइल में कंसेंट उसको पढ़ाया, बोला ये सब कुछ बता रखा था तेरे को, तूने बोला नहीं मुझे करना है. So these are the things, these are the little things that you should be very much clear about your subject. What are your limitations? What are your complications? You are using implants in orthopedics. Implant is metal. Metal can break down. Metal can bend. There can be link shortening. Okay? There can be non-union. There can be delayed union. So proper consent, informed consent, signed consent, and everything explained to the patient and his attendant before the surgery. If complication occurs during the surgery, you have to take care of that complication and you have to inform the patient about that very complication. This is very important. कुछ पेशेंट में हो जाता है, उसको बचाना नहीं, उसको छुपाना नहीं. You have to talk to patient and you have to document in the file. These are the things which are going to save you when you any bone injury, section 320 IPC. Foot dislocation, section 320 IPC. Now there is a how to differentiate between antemortem and postmortem fracture. Age of fractures, medical evidence, and better syndrome. These are the things I will be taking in this medical legal part. So it is 320 IPC. Any dislocation of bone or teeth. There also you have to be very vigilant. Nowadays the patients are very clever. मतलब को मार पड़ती है पर दांत टूटता नहीं, उसके बाद खुद तोड़ के ले आते हैं दांत. यहाँ तो कम मिलेंगे हमें हिमाचल में, but in our side it is very common. So you have to differentiate, and how to differentiate? You can differentiate by taking proper history, mode of trauma, कैसा मिला है, कैसे लगी है चोट, and then by microscopic examination there are many other modalities. So mostly we are being called for the witnesses. Here in Himachal, luckily I have been only called for professional witnesses, like in roadside accident or in a motor vehicle accident where they have to claim the compensation. The judge calls us to ask if this fracture pattern is possible in a motor vehicle accident or not. So very easy for you, a fall from height
Any person who has a fall from height will be having fractures of calcaneum, bilateral calcaneum, and fracture of spine. Motor vehicle accident, depending on the type of the accident, you can delineate what type of injury can occur. Okay. So these are the features of an antemortem and a postmortem fracture. Fracture occurs. There is a future blood is absent in postmortem. The contusions around the fracture site are not seen. The muscle lacerations are not seen. The signs of healing are absent in a postmortem fracture. And there in histopathology also you don't see any infiltration of the cells, and there are no sequelae. So it's very basic that after that if during the transport or during shifting the fracture has occurred, so it will be different from a fracture in a live bone. There will be no blood, no infiltration of the cells, there will be no signs of the fracture healing. So age of skull fractures, this is very important in the injury to the skull. So in 1 week, the edges of the fractures they stick together. In 3 months, the skull fractures take 3 months to completely heal. And the healing of the skull fracture takes by intramembranous ossification. This is also very important. Other bone which heals by intramembranous ossification is clavicle. So these are the radiological features. We can't generalize the features of the fracture healing because the age of bone union is different for different bones. Like for radius and for ulna, the callus appears at a designated time. For femur, a long bone, it takes more to appear. So in generalize, the soft callus is seen around 2 to 4 weeks after the fracture, if it is properly immobilized. And the partial bridging is seen in 8 weeks and complete bridging is seen in 10 weeks. In the next slide, I will show what you mean by partial bridging of the callus and what do you mean by complete bridging of the callus. The remodeling takes a year or more. So this is at 6 months, this is a fracture of a humerus. See, in 6 months, this is the callus. This is the callus. The callus is completely bridging the fracture site. So this is a complete bridging of the callus, seen in the fracture of the shaft of the humerus. It's seen around 6 months. See, even after 2 years, though the body has tried to remodel, it is not remodeled to the original. So the remodeling has taken place, but it is not as accurate as it seen in the original humerus. So it takes around 2 years for such access. The union, most likely the union has started after 6 weeks. You can see this is soft callus formation. In the soft tissue, you can see a radio wave shadow. So these are the how to differentiate bleaching callus, partial callus, and callus formation. Pt.JLNGMC syndrome, you must have seen. You have to be very vigilant, especially if it's a female child, a second or third born female child. Usually it is not brought by the parents, but some of the relatives they brought. You have to correlate the history of the patient and what you can see on X-rays. You can see fractures in various bones and various stages of healing. This was a supraumbilical fracture of the humerus. This is callus formation in the same patient. If you see at the ribs, there are multiple fractures of the ribs. So multiple heel fractures in a kid at multiple stages of the healing with not so specific clinical history, you should have a diagnosis of a Pt.JLNGMC syndrome. These are some cases in which the surgeon has to give compensation for that. For a fracture of the jaw, there was operating and there was a broken K wire which was left in the place. The patient was not explained about the same. So in the future, when they did the X-ray from outside, they saw pin, a K wire in the jaw, which was not so significant. But they went in the report and the favor of the court was in the favor of the patient. So complications, if there, you have to manage it. You can't manage it, you have to share with your patient and you have to send the patient to a place where it can be managed. You can't discharge the patient and send him to home. This is what we have learned, and we have to be very professional while performing the surgery, while talking to the patient, while explaining him about the facilities available with you, and explaining him about how the fracture will behave, how the metal will behave, and what will be the complications. So these were my references. I would like to thank Dr. Pradesh and Dr. Villor for some inputs about antemortem and postmortem. Thank you very much. This is my department.
Nowadays, we have a titanium-based nailing system. Primarily, we used to have stainless steel-based nailing system. The idea behind operative orthopedics, wants to ask that fracture to do it. But the idea behind operative orthopedics is that early mobilization, early union. Because if we put the patient, you see there is a fracture of the radius, it will unite, malunite, okay? But the fact is we want to put patient on function, we want to put patient on his livelihood, especially the low limb fractures, we can't put the patient on bed for 3 months. Initially in tibial fractures, they used to apply tractions. 2 blades were applied and the patient was sent home for 3 months. Imagine someone with a fraction and 3 blades for 3 months. What we do now, patient came with fractured tibia, we operate, next day we put nail, we mobilize the patient, 3rd day, 4th day he is home and 1 month he is walking to us. So these are the benefits of the nailing system which are there. Initially we used to have stainless steel nail which had some complications, but the titanium nailing system they are quite a lot. We need not to remove them. The infection chances are less and the healing are less. Thank you. Sir. MRI sir, titanium or medical grade. Access is not medical. But nowadays we have good MRIs. We have good MRIs and we have shielders also. Especially like if you want to get an MRI of brain and you can implant your ankle, we can shield that ankle, you can have an MRI of the brain. Titanium is not, you can have MRI of titanium. It is around 15 years. 15 years. Nowadays, even we have stainless steel which is compatible with MRI. Now I would like to request Dr. Vandana ma'am to please give certificate to Dr. Manik Sagar sir. Now I request Dr. Pradeep Singh sir to please give certificate to Dr. Vandana ma'am. Moving on to our next session. And the topic for the session is Preparation of Poison Report by Dr. Vinod Kumar sir. So I would like to request Dr. Surinder Pal sir to please chair this session. Joining us online are Dr. Ashok sir from Pathankot, Dr. Mohammad Maqsood sir from Pakistan, Dr. Harpreet Singh sir from Ambala. Good afternoon to all the delegates, all the faculty members, and my dear students. Today, on the occasion of Forensic Day celebration, I am presenting how to prepare a poisoning report. जैसा कि डॉक्टर मानिक ने अभी बहुत बढ़िया बताया कि कंसेंट जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि आगे के लिए आप सेफ हो जाए। तो सबसे पहले कंसेंट क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देता हूँ। कंसेंट होता है दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट। एक पार्टी होगी इसमें जो कोई फैसिलिटी देगी और दूसरी पार्टी होगी वो फैसिलिटी रिसीव करेगी।
तो एग्रीमेंट जो है दोनों की बिलिंग से होगा, बिलिंग मिलेगी उसके बाद एग्रीमेंट होगा, ठीक है, ये है कंसेंट। इसके अलावा एक और, जब मैं PDS कर रहा था उस टाइम हमारे जो टीचर्स हुआ करते थे उनमें से किसी एक टीचर ने हमको बताया था कि जब भी आप प्रॉब्लम में हो तब पेशेंट के अटेंडेंस, पेशेंट को नहीं, पेशेंट के अटेंडेंस को थोड़ा सा बता दो, कंडीशन के बारे में बता दो इन द सेंस कि उनको थोड़ा सा डरा दो, ठीक है। डराना क्या है कि कंडीशन कैसी है, क्रिटिकल है या स्टेबल है, और दूसरी बात ये कि उसकी कॉम्प्लिकेशन अच्छे से डिटेल कर दो, डिटेल कर दी। उसके बाद उनको ये भी बता दो कि वो अपने पेशेंट को कहीं और ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं, अपनी जो हमारी जो हम कर सकते हैं वो भी बता दो, और जो हम नहीं पॉसिबल है हमारे सेटअप में वो भी उनको अच्छे से बता दो, ठीक है। और इससे क्या होगा कि कल को इन केस अगर कुछ ऊपर नीचे होता है देन यू आर सेफ, ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है यू आर सेफ, अगर अच्छा हो जाता है तो वो बोल देंगे डॉक्टर साहब तो भगवान है, उन्होंने तो हमारे पेशेंट को बचा लिया। तो विद दिस आई एम स्टार्टिंग माय टुडेज टॉपिक, हाउ टू प्रिपेयर अ पॉइजनिंग रिपोर्ट। तो सबसे पहले पंकज सर ने अभी हमको बताया पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के बारे में। पॉइजनिंग ट्रीटमेंट पार्ट सर ने बहुत अच्छा कवर किया, बहुत ही बढ़िया। और उसके बाद एक थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ मेडिकल ऑफिसर। आप बनेंगे MBBS के बाद मेडिकल ऑफिसर बनेंगे, यू विल नॉट बी जस्ट डॉक्टर, ठीक है। तो व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ मेडिकल ऑफिसर। जब ऑफिसर लग जाएगा नाम के साथ, यू विल हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड यू विल हैव मैनी ड्यूटीज। फर्स्ट ड्यूटी इज जो सर ने बताया आपको ट्रीटमेंट पार्ट इज योर फर्स्ट ड्यूटी। सेकंड नंबर 2 ड्यूटी नंबर 2 इज लीगल ड्यूटी। पॉइजनिंग रिपोर्ट, जब पॉइजनिंग का केस आएगा उसमें इट इज योर लीगल ड्यूटी टू प्रिपेयर अ पॉइजनिंग रिपोर्ट। पॉइजनिंग रिपोर्ट बनानी पड़ेगी आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पॉइजन? पॉइजन क्या होता है? एनी सब्सटेंस which if introduced in the living body or brought into contact with the body or any part thereof will produce ill health or death by its constitutional or local effects or both. ठीक है, पॉइजनिंग का पेशेंट आपके पास आ जाता है या आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है। तो उस केस में सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या है? पॉइजनिंग की रिपोर्ट बनानी है, आपने पॉइजनिंग रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स? क्या क्या आपको जरूरत है, क्या चाहिए आपको? सबसे पहले चाहिए होगा पुलिस डॉकेट। जब तक पुलिस की एप्लीकेशन नहीं आएगी यू विल नॉट कंडक्ट अ पॉइजनिंग रिपोर्ट, यू विल नॉट प्रिपेयर अ पॉइजनिंग रिपोर्ट, यू कैन नॉट प्रिपेयर, ठीक है। बना सकते हो बट यू विल हैंड इट ओवर ओनली व्हेन यू विल गेट यू रिसीव दिस डॉकेट फ्रॉम द पुलिस। डॉक्यूमेंट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। इट इज हैंड रिटन और समटाइम्स इट इज प्रिंटेड और टाइप्ड एप्लीकेशन फ्रॉम दिस some police personnel in which the details of the patient will be written and little history, उसमें थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी डाली रहेगी कि पेशेंट ने क्या खाया है, अगर खाया है या फिर सस्पेक्टेड है कि खाया है तो वो भी उसमें डिटेल करेंगे कि हाँ उनको डाउट है कि उन्होंने इस तरह का कुछ खाया हुआ है, पॉइजनस सब्सटेंस खाया है, तो उस तरह से वो हिस्ट्री लिखी रहेगी, कब खाया है, कहाँ पे खाया है, सब कुछ एवरीथिंग, एवरी डिटेल विल बी प्रेजेंट इन दैट एप्लीकेशन। और साथ में आपको रिक्वेस्ट किया होगा उन्होंने कि डॉक्टर साहब प्लीज इसका जो है काइंडली एक पॉइजनिंग रिपोर्ट जो है इसमें प्रिपेयर की जाए। दिस इज द ये फॉर्मेट है जो यहाँ पे हमारे मेडिकल कॉलेज चंबा में है, जो पॉइजनिंग रिपोर्ट के लिए या फिर MSc के लिए, MSc इन केस ऑफ इंजरी रिपोर्ट, और दोनों के लिए फॉर्मेट एक ही यूज होता है। तो पॉइजनिंग रिपोर्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, उसके लिए यही वाला फॉर्मेट वी यूज इन अवर मेडिकल कॉलेज चंबा, ठीक है। सबसे ऊपर जैसे कि आप देखें Pt.JLNGMC एंड हॉस्पिटल चंबा, उसके बाद पर्टिकुलर्स रहेंगे, मैं एक एक करके इनको आपको बता देता हूँ। प्रीलिमिनरी पर्टिकुलर्स में सबसे पहले डेट रहेगी, डेटेड MLC नंबर या पॉइजनिंग रिपोर्ट नंबर जो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट में नाम आएगा, नाम वही होगा, नाम आप वही लिखेंगे जो पुलिस पेपर्स में, पुलिस डॉकेट में लिखा रहेगा,
उसको अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो जो पेशेंट होगा उसका आधार कार्ड आप मांग सकते हैं, या वोटर आई कार्ड, या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो लीगली वैलिड हो, ठीक है। तो उसके साथ मैच करो उसको, और आफ्टर दैट MLC या जो पॉइजनिंग रिपोर्ट है उसमें उसको आप एंटर करो। नेम के लिए कॉलम यहाँ पे रहेगा, ये नाम के लिए कॉलम है, ठीक है। आफ्टर दैट सन ऑफ, वाइफ ऑफ या डॉटर ऑफ, एज, सारे पैरामीटर्स पर्टिकुलर सारे इसमें डालने हैं। सेक्स, कास्ट की जगह आप हिंदू या फिर रिलीजन भी डाल सकते हैं अगर कास्ट नहीं मालूम है। ऑक्यूपेशन जरूरी रहती है। कास्ट और ऑक्यूपेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि कुछ एक जैसे कोई पॉइजनिंग है, ऑक्यूपेशनल पॉइजनिंग होती है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक्सपोज है आप किसी हार्मफुल केमिकल के लिए, तो उस केस में ये ऑक्यूपेशन जरूरी रहती है। रेजिडेंस एड्रेस डाल देंगे आप, नेम ऑफ रिलेटिव और फ्रेंड जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट आए हैं। डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें एक डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन है, नेक्स्ट इज डेट एंड आवर ऑफ अराइवल। तो इसमें दोनों में डिफरेंस है, डेट हो सकता है सेम भी हो, टाइम हो सकता है सेम ही रखें आप, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? एक एग्जामिनेशन का टाइम डालेंगे आप, हो सकता है आप ओपीडी में बिजी हैं, कैजुअलिटी में आपके पास बहुत रश है, और जब पेशेंट आता है उस टाइम आप इमीडिएटली प्रिपेयर या पेशेंट को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप डालेंगे डेट ऑफ अराइवल, पेशेंट का आने का टाइम क्या है, डेट एंड आवर ऑफ अराइवल, और साथ में दूसरा है डेट एंड आवर ऑफ एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन आप जिस भी टाइम जब भी करेंगे आप एग्जामिन पेशेंट को, दैट टाइम एंड डेट यू विल मेंशन देयर। नेक्स्ट इज नंबर एंड डेट ऑफ पुलिस डॉकेट। जो पुलिस डॉकेट पुलिस एप्लीकेशन मैंने बताई, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर नंबर रहेगा जो सेम नहीं हो सकता है, दो एप्लीकेशन का नंबर रहेगा और साथ में डेट भी रहेगी उसमें, वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। नेम एंड नंबर ऑफ कांस्टेबल, तो थोड़ा सा मैं इसमें आपको फिर से बता देता हूँ। पुलिस जो भी पुलिस पर्सनल होते हैं, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, दो रैंक ऐसे होंगे जिनका जो है एक बेल्ट नंबर होता है, बेल्ट नंबर एक उनको पर्टिकुलर नंबर अलॉटेड होता है, जैसे 357, 571 इस तरह का अलॉटेड नंबर रहेगा, और किसी भी दो पुलिस पर्सन का नंबर जो है वो सेम नहीं होगा, ठीक है। तो ये नंबर रहता है बट रहेगा कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल। जब एक बार इफ द पुलिस पर्सन इज से ASI और अबव, ASI या उससे ऊपर वाले जो भी पुलिस पर्सन रहेंगे, दे आर नॉट अलॉटेड दिस बेल्ट नंबर। तो यहाँ पे अगर कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, तो उनका नंबर और नाम आपको दोनों मेंशन करना है। इफ एडमिटेड, नेक्स्ट इज इफ एडमिटेड, इफ एडमिटेड, नेक्स्ट कॉलम इज इफ एडमिटेड। अगर एडमिशन हुई है पेशेंट की तो उसमें डेट ऑफ एडमिशन और डेट ऑफ डिस्चार्ज भी आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज यही एडमिशन के ही केस में डेट एंड आवर ऑफ रिपोर्ट सेंड टू पुलिस। जब भी आपने पुलिस को रिपोर्ट जो है भेजनी है, उसकी डेट और आपने आवर उसमें मेंशन करना है। कंसेंट पार्ट डॉक्टर मानिक ने जैसे बहुत बढ़िया बताया, तो कंसेंट जो है वो अच्छे से लेना है। कंसेंट की 4 कॉलम वो अच्छे से आने चाहिए आपको, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट कॉलम होता है कि आई एम विलिंगनेस देनी है अपनी एग्रीमेंट, जैसे बताया कंसेंट इज एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। तो आई एम विलिंग टू गेट माई सेल्फ एग्जामिन, यहाँ पे करवाना चाहता हूँ अपना एग्जामिनेशन, ठीक है। और जो मेरी बॉडी पे इंजरीज हैं वो सारी जो है MLC में सॉरी इंजरीज या जो ये पॉइजनिंग वाला केस है, इसमें जो सब कुछ जो भी इस पॉइजनिंग रिपोर्ट में मेंशन है वो सब कुछ मुझे मेरी मातृभाषा में वर्नाक्युलर लैंग्वेज में समझा दिया गया है, और कोई ऐसी बात नहीं है जो मुझे ना बताई गई हो और यहाँ पे मेंशन ना हो। और इसके अलावा आई हैव नॉट बीन एग्जामिन्ड बाय एनी डॉक्टर प्रायर टू दिस इन दिस केस, ठीक है। ये 4 चीजें आपने जरूर मेंशन करनी है इसमें। मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, एक इसमें और कॉलम रहता है, इसमें मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन के लिए ये वाला कॉलम, ठीक है। मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन प्रेफरेबली 2 मार्क्स ऑफ 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपने मेंशन करने हैं वहाँ पे। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, ब्लैक मोल, स्कार मार्क, पुरानी इंजरी का किसी का स्कार मार्क है, पॉलीडेक्टिली, कहीं पे अगर एक्स्ट्रा डिजिट है बॉडी इसमें अपने लिम्स में, या फिर टैटू मार्क्स, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज
नेक्स्ट इज पर्टिकुलर्स ऑफ इंजरीज या फिर सिम्टम्स इन केस ऑफ पॉइजनिंग। पॉइजनिंग का जो भी केस होगा उसमें जो भी सिम्टम्स या हिस्ट्री लेके आएंगे। अब जो है एग्जामिनेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। तो अलेज हिस्ट्री, अलेज सबसे पहले अलेज का मीनिंग, अलेज मीन्स एज पर समवन, किसी और के द्वारा जो भी आपके पास हिस्ट्री लाई गई है पुलिस के द्वारा या फिर जो आपके पास पेशेंट आया है, उनके अटेंडेंट्स आए हैं, उनके थ्रू आपको जो भी हिस्ट्री मिलती है वो हिस्ट्री अलेज, उसको अलेज कहा जाएगा। अलेज हिस्ट्री, तो इसमें मैनर क्या रहेगा, मीन्स पॉइजनिंग हुई है, अगर पॉइजन लिया है तो किस तरह से लिया है। होमिसाइडल है, मीन्स किसी ने उसको मारने के लिए दिया है, किसी और के द्वारा दिया गया। सुसाइडल मीन्स खुद लिया है अपनी डेथ करने के लिए, या फिर एक्सीडेंटल है। मोस्ट ऑफ द केसेस जो आपके पास आएंगे, ये कोई भी इसमें मैनर कुछ भी रहा हो, बट आपके पास जो भी केसेस आएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर्स में यही लिखा होगा, जो डॉक्यूमेंट आएगा उसमें यही लिखा होगा कि एक्सीडेंटली ये ऐसा हो गया है, ठीक है। तो बट आपको फिर भी मालूम होना चाहिए कि होमिसाइडल, सुसाइडल और एक्सीडेंटल ये तीनों मैनर पॉसिबल है पॉइजनिंग के केस में। साथ में कि इसमें मेंशन रहेगा कि डेट एंड टाइम, कब कंज्यूम किया है पॉइजन, ठीक है। पॉइजन हुआ है, पॉइजनिंग हुई है तो कब हुई है, कौन सी तारीख को हुई है, कितने बजे हुई है। रूट, पॉइजनिंग जो है इंजेस्ट हो सकता है, या फिर आईवी रूट से जा सकता है, या फिर इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, या पैच जो स्किन के कांटेक्ट में होता है, या फिर एक और रूट है जो है ब्रीथिंग रूट, इसको सांस के थ्रू भी दिया जा सकता है। तो ये सारे रूट्स जो हैं वो वहाँ मेंशन हो सकते हैं, और इन केस अगर मेंशन नहीं है तो आप उनको कंफर्म करने के लिए हिस्ट्री में पूछ सकते हैं इसको। नेक्स्ट इज पॉइजन। तो पॉइजन इसमें जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया कि कई बार ऐसा है कि हिस्ट्री देयर इज क्लियर कट हिस्ट्री कि पॉइजनिंग हुई है, ठीक है। अगर हुई है क्लियर कट हिस्ट्री है, उसमें आपको मालूम है कि पॉइजनिंग हुई है, तब तो इट इज वेरी गुड। अगर आपको क्लियर नहीं है, पेशेंट आया है आपके पास, सिर्फ पेशेंट ही है, अभी पुलिस डॉक्यूमेंट भी नहीं आया है, जस्ट यू आर हैविंग पेशेंट, और उसमें देख रहे हैं आपकी फीचर्स हैं कुछ मिमिक कर रही है, पेट में दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, नॉजिया वोमिटिंग लगा हुआ है, फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब इसमें क्या हो सकता है, पेट दर्द है, ठीक है, किस वजह से। तो उसके लिए थोड़ा सा इसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे चल के कि इनको टॉक्सिक ड्रोन में हम जो है इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो उनको टॉक्सिक ड्रोन के हिसाब से हम ट्रीट करेंगे। बट इसमें ऐसा रहता है कि जो सिम्टम्स होते हैं वो मिमिक करते हैं, पॉइजनिंग के सिम्टम्स बाकी डिसीजेस के साथ भी मिमिक कर जाते हैं। तो इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट कि किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचना कि हाँ पॉइजनिंग हुई है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कोई भी ऐसा सिंगल सिम्टम नहीं है पॉइजनिंग के लिए। आप किसी भी पॉइजनिंग में, मैं जनरल पॉइजनिंग यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो उसमें कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं है सिंगल सिम्टम, जिससे भी कि यू कैन बी श्योर कि हाँ दिस इज दिस टाइप ऑफ पॉइजनिंग, या फिर कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है, सिम्टम्स का कोई ऐसा ग्रुप नहीं है दैट कैन कैटेगराइज एनी पॉइजनिंग। और साथ में ये हम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की मिमिक करती हैं ये वेरियस बॉडीली कंडीशंस और डिजीज के साथ। तो इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू कम टू अ कंक्लूजन दैट वेदर देयर इज पॉइजनिंग और नॉट। तो हाउ टू सस्पेक्ट और व्हेन टू सस्पेक्ट अ पॉइजनिंग और बाकी डिजीज में थोड़ा सा एक डिफरेंस ये रहता है कि इसमें सडन अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स, सडन अपीयरेंस की जब भी पेशेंट हिस्ट्री देगा या फिर अटेंडेंस हिस्ट्री देगी कि जैसे ही पानी पिया जी, तो उसके बाद या फिर जैसे ही दवाई खाई, दवाई रखी हुई थी सर की उठाई और पी ली या खा ली, तो उसके बाद उनको जी थोड़ा बेहोशी आ गई और मुंह से झाग आने लग पड़ा, ठीक है। तो इस तरह की हिस्ट्री की अचानक सडन हिस्ट्री ऑफ द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स विल बी देयर। और नेक्स्ट इज दो चीज़ें इसमें हमको जो है कंक्लूड करनी है, एक तो पॉइजनिंग हुई है या नहीं हुई, ठीक है, और सेकंड इज हुई है तो कौन सा पॉइजनिंग, ठीक है। उसके लिए फिर हम चलते हैं टॉक्सिड्रोमिक अप्रोच में। इसमें टॉक्सिड्रोम क्या होता है? टॉक्सिड्रोम इट इज सिंड्रोम ऑफ सिम्टम्स एंड साइंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ टॉक्सिक एजेंट। जो भी टॉक्सिक एजेंट, जो भी पॉइजन, जैसी डेफिनेशन बताई, डेफिनेशन कवर्स ऑलमोस्ट ऑल द सब्सटेंसेस इन द वर्ल्ड, कंसीडर कर सकते हो आप। कोई भी सब्सटेंस नहीं है जिसको कि यू कैन एक्सक्लूड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पॉइजनिंग। इवन द वाटर को भी आप पॉइजन मान सकते हो। तो फिर इतने सब्सटेंसेस हैं, तो फिर कैसे आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि विच पॉइजन इज देयर इन दिस केस? तो उसके लिए टॉक्सिड्रोम कैटेगराइज कर देते हैं और इसको हम थोड़ा सा सिम्टम्स के हिसाब से कैटेगराइज कर देते हैं।
उससे पहले क्या रहता है एग्जामिनेशन से पहले? जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। पॉइजनिंग पे कंक्लूजन देने से पहले आपको जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन देखना है पेशेंट का कि कंडीशन कैसी है उसकी, कॉन्शियसनेस, उसकी कोऑपरेटिवनेस और ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन, ये आपने देखना है। नेक्स्ट इज वाइटल्स, SpO2, रेस्पिरेटरी रेट, पल्स रेट, BP और साइनोसिस, इक्ट्रस, ये सब कुछ आपने देखना है उनमें। पेशेंट में ब्रेथ ऑर्डर, कुछ पॉइजन होते हैं जो स्मेल एमिट करते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर स्मेल उसमें पेशेंट की ब्रेथ से आपको यू आर एबल टू स्मेल, देन वो आपने मेंशन करना है। या फिर कलर ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन का या म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर, सम पॉइजंस कैन इम्पार्ट पर्टिकुलर कलर। कंडीशन ऑफ द क्लोथ कैसे हैं उसके, वोमिटस है कपड़ों पे या ब्लड है, तो वो भी यू विल हैव टू मेंशन इन द दिस पॉइजनिंग रिपोर्ट। एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं फिर टॉक्सिड्रोमिक अप्रोच। टॉक्सिड्रोम हम डिस्कस कर चुके हैं और वेरियस टॉक्सिड्रोम अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से साइन सिम्टम्स आपको कौन से पॉइजनिंग में या कौन से टॉक्सिड्रोम में मिलेंगे। तो फर्स्ट इज acute exposure to solvents, anesthetics or sedatives, that is SAS toxidrome. SAS solvents, anesthetics or sedatives, SAS toxidrome, इसमें CNS depression रहता है। CNS depression leading to decreased level of consciousness, depressed respiration and ataxia. SAS. Next is anticholinergic syndrome, toxidrome, sorry. Anticholinergic, इसमें under stimulation of the cholinergic receptors leading to dilated pupils, decreased sweating, elevated temperature and mental status changes such as hallucinations. Third is anticoagulants toxidrome. There is alteration of blood coagulation leading to abnormal bleeding indicated by excessive bruising and bleeding from mucous membranes, stomach, intestines, urinary bladder and wounds as well as retroperitoneal and intracranial fluid. Next is cholinergic toxidrome. इसमें overstimulation of cholinergic receptors leading to pinpoint pupils, seizing, wheezing and twitching, excessive output from all secretory cells and organs, bronchial secretions, saliva, tears, sweats, vomiting, incontinence. ठीक है, ये सारे सिक्रीशंस एंड जैसा पंकज सर ने बताया कि जो पेशेंट है वो अपने ही सिक्रीशंस में डाउन करता है। इसमें कन्वर्जेंट टॉक्सिड्रोम, इसमें CNS एक्साइटेशन लीडिंग टू जनरलाइज्ड कन्वर्जन्स। इरिटेंट और corrosive टॉक्सिड्रोम लीडिंग टू इरिटेशन ऑफ एक्सपोज्ड स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, पल्मोनरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। कफिंग, wheezing, respiratory distress is there and GI symptoms can be there. Next is knockdown toxidrome. There is altered states of consciousness progressing from fatigue and lightheadedness to seizures and coma, and cardiac signs and symptoms can be there. Opioid toxidrome, इसमें रहेगा pinpoint pupils, CNS depression और respiratory depression. Stress response toxidrome, इसमें catecholamine excess और CNS excitation leading to confusion, panic and increased pulse and blood pressure. ये तो हो गया अभी तक का जो है हमने डिस्कस किया इंजरी के बारे में। इंजरी डिस्कस कर ली तो इट डज नॉट मीन कि यू हैव कंप्लीटेड योर दिस लीगल पार्ट। कई बार ऐसा होता है कि आपके माइंड में ऐसा रहेगा कि हाँ पेशेंट इंजरी के लिए लाया हुआ है तो हमने सिर्फ इंजरी के बारे में डिस्कस करना है या इंजरी के बारे में डिटेल करना है। नो, यू विल हैव टू एग्जामिन द पेशेंट फुली। उसकी बॉडी देखनी है आपने कि कहीं और कोई चोट तो नहीं है उसकी बॉडी पे, फ्रेश इंजरी तो नहीं है, या कोई और ऐसा कोई जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो पॉइजनिंग है दैट मिमिक्स मैनी अदर कंडीशंस, तो आपने वो भी देखना है कि बॉडी पे कुछ ऐसा कोई और डिजीज तो नहीं जिसकी वजह से आप ये सिम्टम्स अपीयर कर लेंगे। ठीक है, तो वो भी यू विल हैव टू मेंशन इन द रिपोर्ट। नेक्स्ट इज सैंपल्स handed over to police, और सैंपल्स आपने which samples you will have to collect during the preparation of this injury report for chemical analysis। ठीक है, ट्रीटमेंट पार्ट में आप करेंगे ही, ठीक है, बाकी उसके बाद जो है केमिकल एनालिसिस के लिए या इंजरी जो लीगल पार्ट है इसमें, उसके लिए आपको क्या क्या प्रिजर्व करना है फॉर केमिकल एनालिसिस। फर्स्ट इज वॉमिट एंड स्टमक कंटेंट्स। वॉमिट अगर किया हुआ है, वो कई बार ऐसा होता है कि पुलिस पर्सन हैव will brought to you
कोई बैग ले आएंगे कि जी ऐसा ऐसा कि रास्ते में आते आते द पेशेंट वोमिटेड आउट, ठीक है, तो वो आपको कंटेन करके ले आएंगे वो, ठीक है, या फिर उसके क्लोथ कपड़ों को ले आएंगे कि सर ऐसा है कि वो सर या मैम ऐसा है कि जब रास्ते में आ रहे थे वॉमिटिंग किया, कपड़े भर दिए तो कपड़े चेंज करके वो हम ले आए होंगे। अगर नहीं लाए होंगे आपने हिस्ट्री पूछनी है कि हैज द पेशेंट वॉमिटेड और नॉट, ठीक है। अगर वॉमिटिंग की हुई है तो वो सैंपल प्रिजर्व करवाना है। वॉमिटस एंड स्टमक कंटेंट्स क्या करेंगे अगर वॉमिट्स नहीं है, वॉमिटिंग नहीं हुई है, क्या करेंगे फिर? गैस्ट्रिक लवाज, ठीक है, गैस्ट्रिक लवाज करेंगे और उसके बाद जो है सैंपल प्रिजर्व करना है, ठीक है। बट गैस्ट्रिक लवाज क्या हर पेशेंट में आप कर सकते हो, हर पॉइजनिंग में आप कर सकते हो? नो, ठीक है, कुछ ही कॉन्ट्राइंडिकेशन भी है, ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन भी है, वो आपने रूल आउट करनी है कि उन पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है। कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, देन गो फॉर गैस्ट्रिक लवाज कीजिए और उसको प्रिजर्व कीजिए। नेक्स्ट इज ब्लड प्रिजर्व करना है, यूरिन प्रिजर्व करना है, स्टूल प्रिजर्व करना है। स्टूल और जो हेयर एंड नेल क्लिपिंग ये क्रॉनिक पॉइजनिंग के लिए और साथ में हैवी मेटल पॉइजनिंग में उन केसेस में ये प्रिजर्व किए जाते हैं, स्टूल एंड हेयर एंड नेल क्लिपिंग। सैंपल जब भी आपने प्रिजर्व करने हैं और पुलिस को हैंड ओवर करने हैं, उससे पहले श्योर करना है कि वो आपने सील किए हैं, अपने सामने सील करवाने हैं। जब तक वो सील नहीं होते हैं, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक आप हैंड ओवर नहीं कर देते हो पुलिस वालों को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यू आर मेडिकल ऑफिसर तो हम जो चाहे करें, ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी को बोल दिया वहाँ भैया है या मैडम है, उनको बोल दिया जी कि आप सैंपल रखो और इसको सील करके भिजवा देना। नो, अपने सामने सील करवाओ, ठीक है, अपने सामने सील करवाओ और सील करवाने के बाद हैंड ओवर करो। आफ्टर दैट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी फिनिश्ड रिलेटेड टू दीज सैंपल्स, ठीक है। जब तक सैंपल हैंड ओवर नहीं हो जाते हैं आफ्टर सीलिंग, तो तब तक यू विल नॉट बी फ्री, ठीक है, तब तक फ्री नहीं होंगे आप। साथ में और क्या हैंड ओवर करना पड़ेगा आपको? जब भी आप सैंपल हैंड ओवर करते हैं उसके साथ एक रिक्वेस्ट लेटर जाता है। रिक्वेस्ट लेटर जाएगा केमिकल एनालिसिस के लिए, केमिकल एग्जामिनर को, टू द नेम ऑफ केमिकल एग्जामिनर। जो भी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज होंगी वहाँ के लिए। यहाँ हिमाचल में 3 फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज है, उसमें से एक जो है वो स्टेट लेवल की है और बाकी जो 2 हैं दैट इज रीजनल लेवल, ठीक है। स्टेट वाली जो है दैट इज प्रेजेंट एट शिमला झुंगा और रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज जो है वो है यहाँ पे धर्मशाला में और मंडी में। तो केमिकल एग्जामिनर, स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी या फिर RFSL जो भी होगा धर्मशाला, झुंगा या शिमला, वहाँ के लिए यू विल एड्रेस। एप्लीकेशन होगी, साथ में सैंपल सील, जो भी आपने सैंपल सील किया है, सील कर दिया, ठीक है, उसके ऊपर यू हैव प्लेस्ड सम सील, किसी सील के साथ उसको आपने सील किया है, वाइट पेपर में उसको जो सैंपल है कवर किया है, सिला है उसको और उसके बाद सील करके उसको हैंड ओवर कर दिया। जो भी सील आपने यूज़ की है, कोई भी सील हो सकती है, वो कुछ भी है, ठीक है, हॉस्पिटल की पर्टिकुलर सील होती है या फिर समटाइम्स कई बार अपनी खुद की भी बनाई होती है अपने पास रखी हुई, कोई भी सील यू हैव यूज्ड ओवर द सैंपल्स, ठीक है। सेम सील आपने वाइट क्लॉथ कटवाना है, सफ़ेद कपड़ा कटवाना है और उस पर सील्स बनवानी है। वही सील आपने सेम ब्लू इंक के साथ उस जो वाइट क्लॉथ कट किया होगा उस पर भी आपने वो सैंपल सील बनवा के उस पर लगानी है और सर्कल करना है, उसको सर्कल करके उसको साइन करना है एंड हैंड ओवर करना है पुलिस को, ठीक है। जितने भी सैंपल्स होंगे उतनी सैंपल सील जाएंगी और साथ में एक केमिकल एनालिसिस को केमिकल एग्जामिनर को लेटर जाएगा, ठीक है। जब ये सब कुछ आप कर देंगे देन दिस सैंपल हैंडिंग ओवर पार्ट इज कंप्लीट। बट उससे पहले आपने जो है ये सैंपल्स हैं वो किसी और के पास हैंड ओवर नहीं करने हैं, पुलिस के अलावा आपने किसी को नहीं देनी है। नेक्स्ट इज ओपिनियन अब रिपोर्ट का आ जाता है। ट्रीटमेंट पार्ट कवर्ड है, ट्रीटमेंट इसमें थोड़ा सा इन केस अगर ट्रीटमेंट भी आप लिखना चाहते हैं तो जो इंजरी पॉइजनिंग रिपोर्ट है उसमें आप ट्रीटमेंट भी मेंशन कर सकते हैं और साथ में इन्वेस्टिगेशन जो भी एडवाइस की है आपने रिलेटेड टू द मैनेजमेंट पार्ट, ठीक है, ट्रीटमेंट पार्ट के रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन एडवाइस की हैं वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज जो है इसके बाद ओपिनियन पे आते हैं। ओपिनियन जब तक कि आपके पास इफ़ यू हैव हैंडेड ओवर, अगर आप कंफर्म्ड हैं कि कौन सी टॉक्सिकोलॉजी में फॉल करता है, ठीक है, तो आप उस टॉक्सिकोलॉजी का नाम मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें प्रोविजनल ओपिनियन आप रखेंगे। तो प्रोविजनली आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट दिस पर्सन और दैट पर्सन हैज कंज्यूम
or is suspected to have consumed such and such poisoning which fall under this toxic group. ठीक है, इस तरह से आप प्रोविजनली मेंशन कर सकते हैं. और फाइनल कब देंगे? फाइनल मिलेगा आपको, फाइनल देना है आपने जो ओपिनियन when you will receive the chemical examiner's report from FSL laboratory. तो कुछ एक पॉइजन है जिनमें कि जो पर्टिकुलर स्मेल जो है इम्पार्ट करते हैं. फर्स्ट इज फॉस्फोरस हैवी मेटल पॉइजनिंग, जिसमें कि आर्सेनिक, फॉस्फोरस, सेलेनियम, थैलियम, पैराथियोन, मैलाथियोन और एल्फोस, ये सारे आ जाते हैं इसमें. गार्लिकी ऑर्डर रहेगा. सेकंड इज इथेनॉल, मिथाइल और प्रोपाइल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, नाइट्राइट, एसीटोन. दीज इम्पार्ट स्वीट एंड फ्रूटी ऑर्डर. जो ब्रेथ का ऑर्डर रहेगा वो स्वीट एंड फ्रूटी रहेगा इसमें. H2S या डाइसल्फिडाम. रॉटन एग्स टाइप ऑफ दिस ब्रेथ स्मेल. SCN, it imparts bitter almond smell. Organophosphorus, it imparts kerosene-like odor. Thank you. Thank you, Dr. Vinod, for studying everyday laboratory. You have told what are the clinical symptoms and what type of biological material to be taken for getting the sample analyzed. But one thing is very important, that before giving your final opinion regarding poison, there should be concrete evidence of poison. That is very important. The concrete evidence of poison can be obtained from the lab of forensic scientists. But sometimes it is found that in spite of taking the poison or giving the poison, the persons, they have died as a result of poisoning. And autopsy findings also favor poison. But the report of the forensic scientist is negative. That does not give any poison. There are many reasons for that. That can be discussed separately. Yes. But in some cases, the problem usually arises about the cause of death. So in such cases, it is very important that the analysis of the gastric valve, blood samples, urine samples before the death of the patient should have been preserved and analyzed. Because after some times, the poison may have been wounded, or due to some other reason, no poison may be detected. And moreover, in one of the cases, I know that where the Supreme Court has come into play, that in spite of negative report of the forensic scientist, if the clinical findings, autopsy findings, and circumstantial evidences favor that the death has occurred due to poisoning, then the forensic pathologist should not hesitate in giving the cause of death as poisoning, though the exact nature of the poison might have not been detected. Right. This is my input. Thank you, sir. Thank you very much, sir. I want to add. Hello. Hi. Am I audible? Yes, sir. Good afternoon, sir. Thank you, Dr. Vinod. You have done a wonderful job in elaborating the various, I think, in preparing the report of medical legal poisoning case. Little bit I want to add here that in case of unheaded poison, you have to arrange for admission, direct admission from the medical in case of emergency. Number two, if this person dies in the hospital, then medical officer is not supposed to hand over the body to the relatives of the patient. Rather, right? And in that case, where you are mentioned in the report that patient is admitted. In the second column comes right after the date of admission and date of discharge.
When you are and comparing, then you mentioned that it should be self-related to the hospital. It is not discharged. You are not giving any policy to the medical legal. Then regarding time of poisoning, time between injury and causing of disease, all kind of that. They are representing that this is poisoning. Thank you, sir. I want to add, Hello. sir, I want to add something. What you have mentioned Okay, here, okay. after the negative report from the FSL, that we can give the poisoning as the cause of death. So we are also done in a few cases over here also. That Vinod was also a expert in that case. And then when we have given the poison as a cause of death, and then the police officer will come to us and said to us that नर्सों आपने तो गलती कर दी है ये वाली चीज़ है ना, FSL की रिपोर्ट तो नेगेटिव आ रही है, आपने इसको पॉइजनिंग दे दिया है. देन फिर आपने उसको बताया भी ये वाली जो है ठीक है ना, देयर आर फ्यू शॉर्ट कमिंग्स दैट विल हैपन एट द collection level when the poison is given as a sample collection and when it is analyzed at the FSL level. So sometimes it is vomited out, as you have also mentioned. So we can, being as a forensic expert, we can give the cause of death as a poisoning, whether we know the nature or of that poison is known or not. And that is quite usual for all these my students बैठे हुए हैं UG वाले जो हैं. You should also know it. अगर FSL की रिपोर्ट नेगेटिव भी आ गई है, if you have got the strong evidence that is from the clinical aspect as well as when we are performing the postmortem examination, that you are very much sure the findings or the postmortem findings that are suggested the poisoning may be the cause of death, then you can give the poisoning as the cause of death. Thank you to all of you. Thank you so much, sir. Now we'd like to request Dr. Surinder Pal, sir, to please give certificate to Dr. Vinod Kumar, sir. Now, I would like to request Dr. Pankaj Gupta, sir, to please give certificate to Dr. Surinder Pal, sir. Moving on to our next session, and the topic for the session is Examination of Rape Survivor by Dr. Parmesh Singh, sir. I would like to request Chairperson Dr. Daisy ma'am to please chair this session. The chairpersons joining us online are Dr. R.K. Goria sir, Faridkot, Dr. Mukesh Yadav sir, Uttar Pradesh, Dr. Sushil sir, Tanda.
First of all, very good afternoon to all the delegates, all the delegates basically, and all the delegates who have joined us online, and to all my seniors and to all my students. First of all, the topic is बहुत इम्पोर्टेंट है ये डॉक्टर आपको पता भी होना चाहिए कि किसको बोला जाता है, हमारे सोसाइटी में क्या क्या मिथ्स हैं, क्या क्या मिसकंसेप्शन है, उसका भी आपको पता होना चाहिए। और एक अगर हमारे पास वेब माइक का एग्जामिनेशन कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं रेट की बात करूँ तो आपको कोई दिमाग में एक ही केस आएगा, अगर और की बात की जाए तो अगर हिमाचल की बात की जाए तो शायद आपने सभी ने सुना होगी, आप कर्नाटक हिमाचल के हिसाब से सबके नाम में आएगा। बट सबसे पहले कि रेट की डेफिनेशन है कहाँ से क्या और आया कहाँ से, जैसे मैं यूज किया और सब क्लासेस में कोई होता हूँ। बेसिकली इट ड्राइव फ्रॉम ए लैटिन वर्ड नेम दैट रेडियो। रेडियो का मीनिंग है टू सीज और स्नैच बाय फोर्स। तो सबसे पहले तो रेट इंडिया में इसके स्टैट्स हैं कितने, अगर नेशनल क्राइम एनसीआरबी की रिकॉर्ड देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया में पर आवर एटलीस्ट रफली 90 रेप केसेस रिपोर्ट हुए। तो अगर बाय द टाइम आई विल फिनिश माय लेक्चर इंडिया में 2 से 3 रेप केसेस हो चुके हैं जो रिपोर्टेड है, एंड इट इज जस्ट 25% जो रिपोर्टेड होते हैं। मोस्ट ऑफ द रेप केसेस दे आर नॉट रिपोर्टेड इन इंडिया। उसमें भी क्लॉजेज हैं कि क्यों रिपोर्ट नहीं हुए, कुछ कॉजेज हैं जैसे कि कुछ लड़कियां डरती हैं, उसको डरा दिया जाता है, या किसी को कुछ पता नहीं होता कि कुछ डरते हैं कि हमें रिपोर्ट करके तो मेरा सोसाइटी में इमेज खराब हो जाएगी। ये और ये वाला अगर आपने किसी ने ऑनलाइन देखा हो तो ये हिमाचल हाईकोर्ट की जनवरी महीने में एक वर्डिक्ट आई थी जिसमें हमारी एक लेडी मेडिकल ऑफिसर थी, उनको सरकार ने 5 लाख रुपए का फाइन लगाया और उसमें कोर्ट में वर्डिक्ट दी थी कि अभी जो फाइन है वो सरकार पे करेगी, उसके बाद पर पर्टिकुलर डॉक्टर से दी जाएगी। तो इसमें हमारे डॉक्टर को भी बड़े ऐसे मिसकंसेप्शन हैं कि हमने कौन से केस में कैसे एग्जामिन करना है, रूटीन एनालिसिस में क्या डिफरेंस है और रेप केसेस के विक्टिम के एग्जामिनेशन में क्या डिफरेंस है। आई होप कि हमारे सेलिब्रिटी मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्योंकि हर वीक उनको कॉल आती है बट एनीवे स्टैट्स की बात करें तो 2010 में हमारे पास 22,174 केसेस एज पर एनसीआरबी। उसके बाद आपको 2012 में हमारा डेटा कार्ड हुआ। उसके बाद हमारे क्रिमिनल लॉ की अमेंडमेंट आई 2013 में, उसमें जो है पनिशमेंट जो है ज़्यादा हार्ड कर दी गई, बट इन स्पाइट ऑफ दैट नंबर ऑफ केसेज आर स्टिल इंक्रीजिंग। उसके बाद 2016 में हमारे पास आ गए 39,068 एंड 2022 में आ गए हमारे पास 31,516 प्लस 6,421 जो हमारे पॉक्सो में है। पॉक्सो होता है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। सबसे पहले तो मेरी बिफोर गोइंग टू द टॉपिक की हाउ टू प्रिपेयर मेडिकल लीगल रिपोर्ट इन रेप विक्टिम, आई वुड लाइक टू एम्फसाइज ऑन सर्टेन चेंजेस इन द लॉ रिलेटेड टू द सेक्सुअल ऑफेंसेस। सबसे पहले इतना तो सभी स्टूडेंट्स को भी पता ही है, पहले हम आईपीसी और सीआरपीसी की बात कर रहे थे, बट फ्रॉम 1 जुलाई 2024 से हमारे आईपीसी और सीआरपीसी जो हैं उनकी जगह पे हमारे नया कानून आ रहा है। उस आईपीसी की जगह पे नया कानून आएगा, उसको बोला जाएगा हमारा भारतीय न्याय संहिता, और जो हमारा सीआरपीसी होगा सीआरपीसी की जगह पे जो कानून आएगा उसको बोला जाएगा भारतीय न्याय संहिता। तो सबसे पहले व्हाट इज रेप?
रेप की डेफिनेशन है बेसिकली अगर रेप एक अगर बोले कि कोई पर्टिकुलर इसकी डेफिनेशन है तो इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन है नहीं। हर कंट्री में लॉ वेरी करता है और हर कंट्री का अकॉर्डिंग टू देयर लॉ उसकी स्पेसिफिक अपनी एक डेफिनेशन है। लेकिन इंडिया में जो इसकी डेफिनेशन है, इंडिया में सबसे पहले जो रेप है इट इज जेंडर स्पेसिफिक। जेंडर स्पेसिफिक मीन्स कि सिर्फ फीमेल के लिए, एक मेल कैन नॉट कमिट की गई, मेल नहीं बोल सकता कि मेरे साथ रेप हुआ, इट इज जेंडर स्पेसिफिक, इट इज ओनली फॉर द फीमेल। ठीक है। सेकंड थिंग इज इसमें कि कौन कौन सी कंडीशन में बोला जाएगा कि रेप कमिट हुआ है। पहले मैं इसमें बताऊं, जो इंडियन पॉपुलेशन है, मोस्ट ऑफ द पब्लिक इवन आवर मेडिकल ऑफिसर्स दे थिंक कि जब तीनों में पेनिट्रेशन होगी तो उसी को रेप माना जाता है, बट इट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। नाउ द डेफिनेशन हैज बीन चेंज्ड कम्प्लीटली। सबसे पहले इसमें अगर जब कभी भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी से भी बात है तो सबसे पहले इसकी शॉर्ट फॉर्म आपने याद रखनी है पीमा, PIMA। P से होगा आपका पेनिट्रेशन, I फॉर इंसर्शन, M फॉर मैनिपुलेशन, A फॉर एप्लीकेशन। तो चलो सबसे पहले जब पेनिट्रेशन की बात आएगी तो सबसे पहले ए मैन इज सेड टू कमिट रेप इफ ही पेनिट्रेट्स हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट इनटू वजाइना, anus, urethra or mouth of a woman or makes her to do so with him or any other person. It amounts to rape. और इसमें एक clause और even bare touching of the labia majora amounts to rape. Even bare touching of the labia majora amounts to rape और doesn't mean कि आपको पहले कंडीशन होती थी कि पेनिस में जाकर पेनिट्रेशन होनी चाहिए तभी amounts to rape, नहीं। अब इसमें ऐसा है कि bare touching of the labia majora उसमें भी चाहे आपकी स्माइनल इजैकुलेशन हुई है चाहे नहीं हुई है, पेनिस इरेक्शन है चाहे नहीं है, डजंट मैटर। इट अमाउंट्स टू रेप। पेनिट्रेशन टू हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट इनटू द वजाइना, यूरेथ्रा, एनस और माउथ, दैट अमाउंट्स टू रेप इंक्लूडिंग लेबर majora। और इसमें आगे अगर आपने एक चीज और है कि मेक्स हर टू डू सो, मेक्स हर टू डू सो का मीनिंग क्या है? मेक्स हर टू डू सो का अब इसमें क्या हो सकता है कि जैसे मान लिया कि एक चीज मैं आउट ऑफ इसके बताऊं, रूटीन में जब कोई भी क्राइम होता है तो क्राइम के लिए एक्यूज को प्रूव करना पड़ता है कि यही एक्यूज है। रेप में इट इज टोटली डिफरेंट। रेप में एक्यूज को प्रूव करना है कि मैं इनोसेंट, लड़की ने जो अरेंज कर दिया वो सच है, तो एक्यूज को प्रूव करना है कि मैं इनोसेंट हूँ। तो इसमें क्या क्लॉज है, जैसे कि मेक्स हर टू डू सो, मेक्स हर टू डू सो की बाई फोर्स, ये उसको जैसे उसकी लड़की को फोर्स कर रहे हैं जानबूझ के तो मेरे साथ ये कर, ताकि मैं कोर्ट में चला जाए तो कोर्ट में बोलूँगा कि साहब मैंने लड़की लिया, सब कुछ मेरे पास लड़की नहीं करता। तो इट मीन्स मेक्स हर टू डू सो का मीनिंग क्या है कि फोर्सिंग द गर्ल टू डू विथ और डू विथ हिम और एनीवन एल्स। सेकंड इंसर्ट इन द सेकंड, मैंने पहले बोला था पीमा का पहला पी पेनिट्रेशन आ गया, सेकंड आ गया इंसर्शन टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट बीइंग द पेनिस into the vagina, anus or urethra of a woman or makes her to do so with him or any other person। तो इसमें जैसे कि कोई अगर अपनी फिंगर यूज करता है या कोई भी ऑब्जेक्ट नॉट बीइंग द पेनिस, if he inserts any object into the vagina, anus or urethra, then it amounts to the rape। उससे आगे मैनिपुलेशन, ये जो मोस्ट ऑफ द हमारे जो मेरा एक्सपीरियंस है, मोस्ट ऑफ द पीपल इसको मिसइंटरप्रेट करते हैं कि मैनिपुलेशन का मीनिंग क्या है। इवन कई हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो बोलते हैं कि मैनिपुलेशन का मीनिंग ये है कि किसी ने किसी को फॉर एग्जांपल जैसे कि किस कर दिया, दैट अमाउंट्स टू रेप। नो, कंप्लीटली रॉन्ग। मैनिपुलेशन का मीनिंग है मैनिपुलेट मीन्स मैन्युअली, यू आर मैन्युअली डूइंग समथिंग। फॉर एग्जांपल कि आप लड़की को आपने ग्रैब किया और उसकी खारिज को जोर जबरदस्ती आप बोल रहे हैं और उसके बाद आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, दैट मीन्स मैनिपुलेशन। Manipulates any part of the body of the woman as to cause the penetration into the vagina, urethra or anus or any part of the body of the woman or makes her to do so with him or any other person। इसका मीनिंग ये है कि that also amounts to rape। अब जैसे आप कुछ मिसकंसेप्शन ये वाले में जैसे मैंने पहले बोला कि बोलते कि इसमें मुझे किस केस that amounts to rape नहीं, ये रेप में नहीं आता, ये अदर सेक्शंस में आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ द वुमन तो उसमें भी किया जाता है। फिर आता है चौथा क्लॉज, पीमा का पेनिट्रेशन हो गया, इंसर्शन हो गया, मैनिपुलेशन हो गया, फिर चौथा आएगा हमारा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में आता है कि whenever a person applies his mouth, male applies his mouth to vagina, anus or urethra of a woman or makes her to do so with him or any other person, so that amounts to rape। बट रेप को अगर कौन कौन से हमारे सर्टन 7 क्लॉजेज हैं
इसमें डिस्क्रिप्शन है कि कौन कौन से क्लॉज है। अगर इनमें से कोई भी अगर मान लीजिए इसमें कोई भी एक्टिविटी करता है देन इट विल अमाउंट टू रेट। पहला जैसे इसमें है अगेंस्ट हर विल विदाउट हर कंसेंट। बट द क्वेरी इज कि विल का मीनिंग क्या है और कंसेंट का मीनिंग क्या है। कंसेंट के ऊपर पहले भी डॉक्टर मानिक सर भी बात कर चुके हैं, डॉक्टर सर भी बात कर चुके हैं। बट विल और कंसेंट में क्या डिफरेंस है? विल का मीनिंग है आपकी इच्छा, कंसेंट का मीनिंग है आपकी सहमति। तो इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे कि अगेंस्ट हर विल है। जैसे मान लीजिए कि किसी ने बोला कि मैं आपको नौकरी भी रख देता हूँ और आपने साथ भाई ये करेंगे, उसके बाद मैं आपको नौकरी पे रख दूँगा। उसकी विल प्रेजेंट नहीं है बट ही वांट्स टू गेट द जॉब और उसके लिए जॉब हो जाती है और उसके बाद वो उसके घर रहता है। और अगर उसके साथ कोई भी इनमें से पेनिट्रेशन एप्लीकेशन करता है देन वांट्स टू गेट। सेकंड थिंग विदाउट कंसेंट, कि आप इसमें जो है जो हमारी फीमेल है उसका फीमेल का कंसेंट प्रेजेंट नहीं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि उसकी विल है बट उसका कंसेंट नहीं। जैसे मान लीजिए कि कोई फीमेल है, उसके जैसे आपने इंडियन सोसाइटी में मोस्ट ऑफ द टाइम देखा ही होगा कि मेल ओरिएंटेड ज़्यादा है। जैसे किसी लड़की के चार बेटियाँ पैदा होगी तो उसको बोला जाता है कि नहीं लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। तो मान लीजिए किसी तांत्रिक के पास चलेगी, तांत्रिक बोलेगा कि मेरे साथ हो जाओ, आपके बेटा हो जाएगा। उसका कंसेंट नहीं है बट उसकी इच्छा है कि ये बेटा हो जाए और उसके साथ हो जाती है। अगर ऐसा होता है दैट अमाउंट टू रेट। थर्ड है विद हर कंसेंट, व्हेन हर कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर और एनीवन इन होम शी इज इंटरेस्टेड इन फीवर ऑफ डेथ और हर्ट। आपने जो लड़की है, लड़की के जो है लड़की के या उसके जो नोन है, उसका बॉयफ्रेंड है, उसका हस्बैंड है, किसी को आपने थ्रेट किया है मैं तेरे को मार दूंगा, तो मैं तेरे पति को मार दूंगा, आपने साथ ऐसा करो, अगर ऐसा कुछ करते हैं दैट अमाउंट्स टू रेप। तो विद हर कंसेंट when the man knows that he is not her husband and that her consent is given because he believes that he is another man to whom she or believes herself to be lawfully married. इस ओवरऑल सेंटेंस का मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं। जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ है एंड द वाइफ जो है अपने घर पे जो है अपने हस्बैंड का वेट करती है और उसको पता था कितने बजे मेरे हस्बैंड आए ना, जैसे मेरे हस्बैंड आएंगे मैं लाइट बंद कर दूँगी। इन बिटवीन क्या होता है कि उसका हस्बैंड नहीं आता है लेकिन जो हस्बैंड का फ्रेंड है वो कमरे में एंटर कर जाता है और वो उसको देख नहीं पाती है और उसके बाद उनके बीच में जो भी है सारा कुछ हो जाता है। इसमें जो मेल है उसको पता है कि ये मेरी बीवी नहीं है और मैं इसे लॉफुली मैरिड भी नहीं हूँ। तो उसके बाद अगर वो उसके पास सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है या आपका पेनिट्रेशन एप्लीकेशन कोई भी कोई नहीं करेगा तो दैट आल्सो अमाउंट्स टू रेप। फिर फिफ्थ क्लॉज आएगा हमारा विद हर कंसेंट when at the time of giving such consent by reason of mental illness or intoxication or their administration or by him personally or to another of any stupefying or unwholesome substance, he is unable to understand the nature and consequences of that to receive his consent. इसका मीनिंग क्या है? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ जाता है, उसके वो अल्कोहल ड्रिंक कर लेते हैं, उसके बाद वो कंसेंट दे देती है और उसके बाद सब कुछ कर लेते हैं, दैट आल्सो अमाउंट्स टू रेप। Basically, she is giving the consent, but she doesn't understand the nature and consequences of the consent for which she is giving the consent. उसके आगे with or without her consent when she is under the 18 years of age और 7th clause है हमारा when she is unable to communicate consent. आपके due to any kind of unsoundness or mind से या किसी वजह से unable to communicate the consent है तो या commit हो जाए तो उसकी वजह से इसकी क्लॉज में फॉल करेगा दैट इट विल आल्सो अमाउंट टू रेप। पहले इसमें क्या था कि हमारे इंडियन सिनेरियोज में जो हमारा ये 6th क्लॉज है विद और विदाउट कंसेंट व्हेन शी इज अंडर 18 इयर्स ऑफ एज, इसमें हमारा एक ग्रे एरिया था। ग्रे एरिया ये था कि हमारी जो कुछ नॉर्थ ईस्ट की कंट्रीज थी उसमें मैरिज एज ओवरऑल इंडिया में मैरिज एज मोर देन 18 है बट नॉर्थ ईस्ट में ड्यू टू लोकल जो भी उनके कस्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें एक ग्रे एरिया था जिसमें 16 ईयर्स की एज की उनको लिमिट दी गई। तो मोर देन 16 है तो ये उसके लिए भी वो जो लॉफुली मैरिड है तब मैंने भी नॉट वांट टू रेप वो वाला एक ग्रे एरिया था। बट अब इसमें जो नए हमारी भारतीय न्याय संहिता आई है इसमें वो वाला क्लॉज हटा दिया गया है। इसमें क्लियर कट है कि इफ अ वुमन वांट्स टू गेट मैरिड देन शी मस्ट बी मोर देन 18 ईयर्स। इसमें एक्सेप्शंस क्या क्या हैं? एक्सेप्शन पहला एक्सेप्शन तो यही है हमारा मेरी डॉक्टर की कोई भी मेडिकल प्रोसीजर इंटरवेंशन आप करते हैं देन इट विल नॉट अमाउंट टू रेप। सेकंड
sexual intercourse or sexual act by a man with his own wife, the wife not being under 80 years of age is not rape. ठीक है. फिर पहले हमारा जो अकॉर्डिंग टू IPC हमारी रेप की डेफिनेशन आती थी वो आती थी 375 में, और हमारे जो रेप की पनिशमेंट आती थी वो आती थी हमारे 376 IPC में. और 376 IPC में हमारे फर्दर क्लॉजेस थे जैसे 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB. बट अब हमारे उसमें जो भी सब क्लॉजेस थे, अब जो नए वाला कानून आया इसमें सबको हटा दिया गया और सबको सेपरेट रखा गया. अब जैसे सबसे पहला whoever except in the cases provided for in the subsection 2 commits rape shall be punished with rigorous imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years, but which may extend to imprisonment for life and shall also liable to be fined. ये और उसमें कि हमारा सबसेक्शन 2 क्या है. सबसेक्शन 2 में इसमें सबसेक्शन 2 में हमारे ये पहला वाला ये है कि whoever being a police officer commits rape within the limits of the police station, अपनी पुलिस के जो पुलिस स्टेशन है उसके प्रीमिसेस में करेगा या जहाँ पे उसका पुलिस स्टेशन का स्टेशन हाउस है वहाँ पे करेगा, या उसके कोई अंडर कस्टडी उसके साथ अगर रेप करेगा तो दैन ही विल बी ट्राइड अंडर सेक्शन 64 BNS. उसके अगला कि being a public servant commits rape on women in such public servants custody or in the custody of the public servant subordinate to such public servant. being a member of armed forces में सारे इसमें हमारे एयर फोर्स वाले भी हैं, नेवल वाले भी सभी आते हैं. और आगे हमारा being on the management of on staff of the jail, remand home, other place of custody established or under by any law for the time being in the force or of a women or children's institution commits rape on an inmate of such jail, remand home, place or institution. इस तरह से ओवरऑल हमारे पास 10-15 क्लॉजेज हैं. ओवरऑल थोड़ा फास्ट चलता हूँ तो जैसे कि आगे आगे हमें commits rape during communal violence, commits rape of a woman going to be pregnant, commits rape on women incapable of giving consent, they are being in position of control, or commits rape on women suffering from mental illness, while committing rape for this grievous bodily harm or disfigures or endangers the life of a woman, commits rape repeatedly on repeat offender, commits rape repeatedly on the same woman, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of person's natural life, and shall also be liable to be fined. फिर उसके आगे 376 IPC में हमारा सबसेक्शन 3 था. अब उसको जो हमारे BNS में 65 BNS में हमारा रिप्लेस कर दिया है. उसमें था पहले कि whoever commits rape on a woman under 16 years of age shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years, but which may also extend the imprisonment for the life, which shall mean imprisonment for the remainder of person's natural life, and shall also be liable to be fined. Provided that such फाइन देते हैं. फाइन बेसिकली फाइन देना चाहिए. फाइन इतना होना चाहिए कि जो विक्टिम है उसको मेडिकल एक्सपेंसेस आएंगे, उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए जो भी खर्चा है इट मस्ट बी टू द मेडिकल एंड रिहेबिलिटेशन एक्सपेंस. फिर हमारा 65 BNS में ये पहले हमारा 376 GME में आता था हमारा whoever commits rape on a woman under 12 years of age, तो ये 12 साल की लड़की से कम के साथ अगर रेप करता है उसके लिए सजा कम से कम 30 साल की होनी चाहिए, या तो फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या फिर डेथ. और इसमें फाइन होगा ही होगा. फाइन कितना करना है? फाइन इतना होना चाहिए कि उसके मेडिकल एक्सपेंसेस को भी कवर किया जा सके और उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए जो भी खर्चा है उसको भी मीट किया जाए. फिर हमारा आता था 376A IPC. नाउ इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय 66 BNS. 376A IPC की अगर आप किसी के साथ रेप कमिट कर रहे हैं एंड यू पुट इन परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट और इन कोमा, और तो उसके लिए हमारे अब ये 66 BNS में है. अब इसमें पनिशमेंट जो है इसके लिए इट शैल नॉट बी लेस देन 20 years, बट इट मे एक्सटेंड टू द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. और डेथ. 376B 67 BNS. इसमें पहले भी मुझे याद है यूजी टाइम पे पढ़ाया जाता था. 376B
बीवी बोला जाता था, क्योंकि जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं दे आर लिविंग सेपरेटली बाई लॉ, सेपरेटली रह रहे हैं, और उस दौरान क्या हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ कोई भी इनमें से तीनों में से कोई भी करता है तो उसकी इम्प्रिजनमेंट है हमारी हस्बैंड 2 years and now it has been covered under section 67 TNS, and imprisonment in this case it can extend up to 7 years. 376C भी कहता है कि कोई भी पर्सन हमारा पोजीशन ऑफ अथॉरिटी या जुडिशियल रिलेशनशिप में होगा तो उसके लिए जो स्पेसिफिक ये वाला 68 DNS में बाकी नए संख्या को कवर किया गया, इसमें कौन कौन से हैं कि पब्लिक सर्वेंट है, सुपरिटेंडेंट और मैनेजर ऑफ जेल, रिमांड होम और अदर प्लेस ऑफ कस्टडी एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड और गिवन ऑफ द इंस्टीट्यूशन on the management of the hospital or being on the staff of the hospital, having some position or fiduciary relationship to reduce or seduce any women, either in his custody or under his staff or present in the premises to have sexual intercourse with him. Such sexual intercourse not amounting to the offence of rape shall be punished with rigorous imprisonment or legal description for a term which shall not be less than 5 years, but it can extend up to 10 years. उसके आगे हमारा ये वाला नया ऐड किया गया है, हमारे पहले आईपीसी में INR 69 BNS हमारा स्पेसिफिकली ऐड किया गया, इसमें लिखा गया है whoever by deceitful meaning और by making by promise to marry a woman without any intention of fulfilling the same. इसका मीनिंग ये है कि ओवरऑल लेमन लैंग्वेज में बोला जाए कि कोई लड़की को शादी का झांसा देता है और उसके बाद जो भी है वो कर लेता है, उसके बाद शादी करने से मना कर देता है, अगर ऐसा करेगा then he will be liable to be punished under section 69 DNS. एंड इम्प्रिजनमेंट इससे आपकी जो है इसमें इम्प्रिजनमेंट जो है up to 10 years and उसमें also be liable to be fined. फिर आता था हमारा 376B में हम अर्ली कवर करते थे गैंग रेप क्या होता है, when where a woman is raped by one or more persons constituting a group or acting in the furtherance of the common intention. Each of these persons shall be deemed to have committed the offence of rape and shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years, but which may extend to life, which shall mean imprisonment for the remainder of person's natural life and fine. और फाइन कितना होना चाहिए वो पहले बात करते हैं. फिर 376DA वाला 70 DNS में where women under 18 years of age is raped by one or more persons constituting a group or acting in further common intention, each of these persons shall be deemed to have committed the offence of rape shall be punished with imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of person's natural life with fine or with death. 376C होता हमारा रिपीट ऑफेंडर्स के लिए, जो भी हमारे रिपीट ऑफेंडर होंगे नॉट टू बी रिकवर्ड अंडर 71 DNS and imprisonment for the remainder of person's natural life or with death. ये वाला जो भी एडिट है इसमें पहले हमारे पास 228 IPC इसमें आपका इशू हमारा फॉर डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम. बट इसमें इशू क्या होता था कि अगर मान लीजिए कि कोई रेप का विक्टिम है, कोई पेपर पब्लिकेशन करेंगे तो हम नहीं कर सकते थे. अगर हम पेपर पब्लिश करते हैं किसी के ऊपर तो हम लायबल थे टू बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 228 IPC. बट नाउ इसमें 72 BNS में कुछ चेंजेस आए हैं हमारे. इसमें अगर पेपर पब्लिकेशन वगैरह करनी है तो उसमें सर्टेन क्राइटेरियाज हैं, उस क्राइटेरियाज को हम अगर फिल कर देते हैं देन वी कैन गो फॉर पेपर पब्लिकेशन. इसमें लेकिन पब्लिकेशन के लिए कौन से मैटर में क्या करना पड़ेगा आपको. सबसे पहले कि बाई और अंडर द ऑर्डर इन द राइटिंग ऑफ द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन इन सच ऑफेंस एक्टिंग इन द गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ द सच इन्वेस्टिगेशन. जो भी आपका पुलिस ऑफिसर है वो वाला बाय रिटन देगा तब. सेकेंड जो विक्टिम है वो रिटन में अप्लाइजेशन देगी तब. थर्ड है कि अगर मान लीजिए कि विक्टिम डेड है और आपको पोस्टमार्टम करते हैं, पोस्टमार्टम में आपको डेट की फाइंडिंग मिलती है और पब्लिश करना चाहते हैं तो आपके जो भी जो विक्टिम है उसके जो नेक्स्ट ऑफ टीम है उनसे उनके प्रायर परमिशन के साथ जो है आप लोग पेपर पब्लिकेशन कर सकते हैं. पहले था हमारा 53 CRPC में
इसमें क्या होता था, इसमें हम एग्जामिनेशन करते थे, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। पहले 53 CRPC में था, अब 51 BNSS में है। और इसमें क्या था कि मैंने पर्सन जो भी पर्सन अरेस्टेड है जिसके ऊपर भी चार्ज लगा है कि इसने रेप कमिट किया है, तो एलिज है कि इसमें जब इसको रीजनेबल ग्राउंड्स हैं और बिलीविंग दैट एन एग्जामिनेशन फॉर दिस पर्सन विल अफोर्ड एविडेंस एज टू commission of an offence which shall be lawful or a legal medical practitioner acting at the request of the police officer for any reason acting in good faith in his aid and under his direction to make such an examination of the person arrested as is necessary in order to ascertain the facts which may afford such evidence and to use such force as reasonably necessary for that purpose. Second, whenever the person or the female is to be examined under this section, the examination shall be made only by or under the supervision of the female registered medical practitioner. And इस हिमाचल में पहले हाई कोर्ट की वर्डिक्ट है कि जो फीमेल टीम है इन ऑल प्रोबेबिलिटी शी मस्ट बी एग्जामिन्ड बाय द लेडी मेडिकल ऑफिसर, फीमेल मेडिकल ऑफिसर। रजिस्टर्ड मेडिकल practitioner without any delay forward the examination report to the investigating officer। फिर इसमें हमारा आएगा CRPC में वो कवर्ड अंडर सेक्शन 52 ऑफ भारतीय BNSS एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर व्हेन ए पर्सन who has committed on a charge of committing an offence of rape and attempt to commit rape and there are reasonable grounds for believing that an examination of this person will afford evidence as to the commission of such offence. It shall be lawful for a registered medical practitioner employed in a hospital run by the government or by a local authority or in absence of such a practitioner within the radius of 16 km from the place where the offence has been committed by any other registered medical practitioner acting at the request of any police officer for any person acting in good faith in his aid and under his direction to make such an examination of a person and to use such force is reasonably necessary for that purpose। बेसिकली ओवरऑल अगर बोला जाए तो इसमें पहली भाई कि इसमें मान लीजिए कि किसी रेप एक्यूज है उसका एग्जामिनेशन करना है, देन आपके रीजनेबल फोर्स दैट कैन बी यूज्ड। बट इसमें ऐसा नहीं है कि रीजनेबल फोर्स यूज़ करनी है तो आपने विक्टिम के साथ फोर्स यूज़ करनी है और तब उसमें आपने उसका एग्जामिनेशन करना है। रीजनेबल फोर्स को यूज़ करेगा वो पुलिस पर्सनल यूज़ करेंगे, आपने सिर्फ एग्जामिनेशन करना। एक और पहले एक और होता था हमारे पास 54 CRPC में होता था कि अगर मान लिया कि कोई रेप का एक्यूज है वो अपने बिहाफ पे भी रिक्वेस्ट कर सकता था कोर्ट में कि मैंने कुछ नहीं किया और मैं अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना चाहता हूँ। बट अब ये हमारा वाला ये वाला सेक्शन इसमें हटा दिया गया है। अब फर्दर आप इसमें अमेंडमेंट होने तक आए तो अलग बात है, पर हाल फिलहाल इस वाले सेक्शन को हटा दिया गया। फिर उसके आगे आएगा सेक्शन 164A CRPC। नाउ इट हैज़ बीन कवर्ड अंडर सेक्शन 184 BNSS। इसमें क्या है कि whenever during the stage when offence of committing rape or attempt to commit rape is under investigation, it is proposed to get the person of the victim with whom rape is alleged or attempted to have been committed or attempted examined by the medical expert. Such examination shall be conducted by the RMP employed in such hospital, run by the government or local authority or in absence of such practitioner by any other registered medical practitioner with the consent of such victim or of the person competent to give such consent on her behalf. Such agreement shall be sent to the registered medical practitioner within 24 hours from the time of receiving of the information relating to the commission of such offence। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसके पास भी कोई रेप की विक्टिम आएगी उसमें क्या क्या करना है, ये आगे 184 में कवर किया गया। बट मैं इसको आगे फर्दर बुक में बताऊँगा कि क्या क्या कवर है उसमें उससे कवर करते हैं। पहले एक चीज़ और इसके 184 BNSS में चेंज हुई है। पहले ऐसा था कि आपने जब कभी भी रेप विक्टिम का एग्जामिनेशन करते थे तो जो रिपोर्ट थी इट मस्ट बी सेंट टू द पुलिस ऑफिसर एज सून एज पॉसिबल। बट इसमें अब जो है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जो है विद इन ए पीरियड ऑफ 7 days she must forward report to the investigating officer। ये वाला हमारे पास नया क्लॉज आया, पहले हमारा पॉसिबल था और हमारे पास 7 days का टाइम। फिर आएगा हमारा 376 CRPC। नाउ इट हैज बीन कवर्ड अंडर 397 BNSS। इसमें ओवरऑल क्या है कि हमारे पास कोई भी अगर मान लीजिए रेप विक्टिम आएगा, मेडिकल लॉस आएगा या बॉक्सो का कोई भी केस आएगा तो चाहे कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो,
उसको जो है फर्स्ट एड और मेडिकल ट्रीटमेंट मस्ट बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर आगे बात है कि हमारे उसमें जो मेडिकल एग्जामिनेशन के मेडिकल लीगल रिपोर्ट जब बनाई जाएगी तो पहले कुछ क्लॉज है इसमें कि क्या डिफरेंस है आपकी रूटीन वाली एमएनसी में और रेप विक्टिम के एग्जामिनेशन वाली है, उस वाले में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए पिंक बुक है, पिंक बुक हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में निकाली हुई है, इसका पता होना चाहिए। और इसमें पिंक बुक में स्पेसिफिकली फ्रॉम Aegis 88 to 100 के आसपास उसमें स्पेसिफिक एक पैटर्न बना हुआ है और उसी पैटर्न में आपको उसका एग्जामिन करना आना चाहिए, पहली चीज़ ये। और सेकेंड चीज़, जब कभी भी आपके पास कोई भी रेप विक्टिम आएगा तो उसके साथ कैसे आपने पैथेटिक होना है, कैसे उसके साथ बिहेव करना है, पहले से ट्रॉमेटाइज है उसके बाद उसके साथ कैसे डील करना है, वो सब आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद इसमें जो एज फार एज आई एम कंसर्न कि मोस्टली जो हमारे सबको प्रॉब्लम आती है वो आती है कि इसमें कंसेंट जो है कि जैसे मान लीजिए कि लड़की 15 साल की है तो उसके साथ रेप होने को है और लड़की जो है मना कर रही है कि मैं अपना एग्जामिनेशन नहीं करवाना चाहती हूँ और उसके घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं हमें इसका एग्जामिनेशन करवाना है। तो बड़ी ही आती है बार कि इसका हम क्या करें, इसका एग्जामिनेशन करें या ना करें, और करें तो ऐसा कहीं तो ऐसा भी कर देते हैं कि घर वालों को साइन लेते हैं और उसके बाद भी कर देते हैं। बट तो मैं इसके लिए बता दूँ आपको कि फॉर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन आपकी कंसेंट की एज है 12 ईयर्स और रूटीन के जब भी हम कंसेंट कहते हैं तो उसमें हमारे रूटीन में जब भी आपका प्रोसीजर बेसिक प्रोसीजर करते हैं तो उसकी एज कंसेंट की एज आपकी 18 ईयर्स। बट इसमें आप जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन मान लीजिए मैंने आपको पहले बताया अगर आपके बाद दो लड़की 15 साल की आती है तो मना करके क्योंकि एग्जामिनेशन नहीं कराना है और घर वाले जितना भी फोर्स करें आप इसका एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। पहली चीज़ तो ये, बट मान लीजिए कि इसमें होगा कि आपने कि नेम ऑफ हॉस्पिटल जो एक चीज़ मस्ट और ये जो आपकी प्री बुक पे जो रिपोर्ट बनाएंगे इट मस्ट बी कॉन्फिडेंशियल, इट मस्ट बी कॉन्फिडेंशियल। इसमें आपने डुप्लीकेट में बनानी है, एक आपके अपने रिकॉर्ड में रहनी चाहिए, वो कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड में रहनी चाहिए, रूटीन में किसी को एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, एक पुलिस की कॉपी जाएगी, पुलिस की कॉपी जब गलती देंगे आप तो सीधे डेवलप नहीं करनी चाहिए। थर्ड कॉपी जो आपकी जो रेप विक्टिम है इसके आपने एग्जामिनेशन दिया उसको प्रोवाइड करना है। बाकी इसमें ओवरऑल जनरल डिस्क्रिप्शन है, हॉस्पिटल का नाम क्या है, नेम एज सेक्स स्लॉट टाइप एनआरसी नंबर ये सब कुछ। बट ओवरऑल इसमें नंबर 12 है, इसमें जब कंसेंट की बात आएगी इसमें सारा कंसेंट भी आपने डिटेल में जो है विक्टिम है उसको डिटेल में बताना है और उसके बाद मान लीजिए विक्टिम मना करती है फिर दे दिए तो आपने यही उसका रिक्वेस्ट देना है और फर्दर आपने प्रोसीड नहीं करते, ठीक है। और इसमें जो भी अगर ओवरऑल क्या करती है आगे इसमें देखना उसमें लिखा गया और आप उसके पेरेंट्स या गार्जियन के सिग्नेचर देंगे। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन नोट पर पहले बात कर चुके हैं। फाइनली जो है कि 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क लेने हैं हमने और अगर भी ऐसे आइडेंटिफिकेशन मार्क हो तो इजीली एक्सेसिबल और फिर भी प्रॉब्लम किसी भी आइडेंटिटी कार्ड किस बेस पे गया तो आप बता नहीं सके कि नहीं बाजू में यहाँ जैसे स्टार हो है स्टार है या मोर है जो भी है तो आइडेंटिफिकेशन मार्क और जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखेंगे अदर आइडेंटिफिकेशन मार्क उसके टाइप साइज और उसकी लोकेशन कॉम्बिनेशन करना टू मिस्टिंग करना फिर उसके रेलेवेंट मेडिकल हिस्ट्री इस तरह से होगा कि पूरी मेडिकल हिस्ट्री की कब डेट और एक्सीडेंट कब हुआ क्या हुआ जिसमें पूरा होगा कि सारा 25 प्रॉब्लम है पूरे की इंजरी है कौन सी जगह इंजरी में तो उसमें आपने टिक आउट करना है हर चीज़ को टिक करना है तो हम क्या क्या हिस्ट्री देने क्या क्या ट्रीटमेंट इस वाली चीज़ को आपको सारा कुछ मिल जाएगा। और लास्ट में जब आएगा आपका डेट एंड टाइम ऑफ कंप्लीशन और एग्जामिनेशन तो उसमें आपने बता देना कि कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं नंबर ऑफ डेज की उसमें एग्जैक्टली मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो फाइनल ओपिनियन सबसे लास्ट में दिया जाएगा। फाइनल ओपिनियन जब आपने देखने जो भी आपने सैंपल सेलेक्ट किए जब सैंपल कलेक्ट करेंगे तो सैंपल कलेक्शन के बाद जब उनकी रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पर आपने ओपिनियन देना होता है। तो ओपिनियन जो है इसमें डिपेंड करता है whether it is penetrating sexual assault or not very penetrating sexual assault। अलग अलग स्टूडेंट चार्ट है हमारे से उसमें क्या होता है विजुअल इंजीनियर नेटल इंजीनियर दोनों है कोई एसेंट है साइलेंट है दोनों अलग अलग तरीके से उससे कॉर्पोरेट नहीं जाएगा उसके बेस पर उसका ओपिनियन देगा। और बट जब कभी भी इसमें एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए जब कभी भी रेप विक्टिम की एग्जामिनेशन किया जाता है तो रेप विक्टिम एग्जामिनेशन के लिए as far as practicable
आपको जो है सेफ फिट का पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ इसमें सेफ फिट होती है, तो सेफ फिट है हमारी सेक्सुअल असॉल्ट प्रिवेंशन गाइडलाइंस की कपड़े। इसमें फिट में जो फिटिंग के लिए कपड़े होंगे, सैंपल्स क्या क्या कलेक्ट करने हैं उसका सारा सामान होगा। ओवरऑल जो भी आपको इसमें जो भी आपका बीच बुक का परफॉर्म है, इसमें आपको किसी भी चीज़ की नीड पड़ेगी तो उसकी सारा चीज़ रखना चाहिए। तो यही है और सभी के दौर का कंसेंट रखने के मैं पावर और जैसा बढ़िया। Here is a scholar and he is a university topper. मतलब इनको धार लगाने की जरूरत नहीं, पहले धार लगाने ये सीखे हैं। तो congratulate you on behalf of the There was a quite difficult topic because so many things have changed, as you can say, on the basis of new laws that will be implemented from July onwards. And not too much for us to for the law of lawyers, but it is also quite difficult for them. जैसे हम बच्चों को बोलते 375 years, 376 years, now they all have been changed. वो सारी books जो है fancy medicine की वो change हो गई। So that's why this difficult topic has been given to the difficult person. So intelligent person को दिया गया था video topic. So I will say nice topic that is presented by you. So that's it. Now I would like to request Dr. Aegis ma'am to please give certificate to Dr. Pradesh. Now I request Dr. Rajneet ma'am to please give certificate to Dr. Aegis. Moving on to our last session of the evening, that is oral or poster presentation by undergraduate and postgraduate students. So I would like to invite Dr. Jogendra Singh Sir, SMO Punjab, and Dr. Pradeep Singh Sir, Forensic Medicine, to please chair the session. Also, the chairpersons joining us online are Dr. Vijay Arora Sir from Tanda, Dr. Rajiv Joshi Sir from Haripur. Starting
with PG presentation. We are present, I think one is Dr. CHAMBA from CHAMBA, and one is Dr. Chauhan. If they are available, later later. Okay, I think they are not available. Now we are starting with the validity function. Now we are closing the scientific sessions, and I would like to invite Dr. Pandit Gupta sir to please say a few words to the audience. Outset, I would like to thank our dignitaries, especially the who's and who's of forensic medicine which have joined us. They are not physically here, but they are present with us, and they have always, as always, they have blessed us with their presence and their knowledge, and we gain a lot from them. I'd like to thank our faculty members, the supervisors, the students, and I'd like to thank all the staff, which forensic department, which has organized this conference. I'd like to start and thank the students of 21 batch, especially those who have made this function a success. But in the end, I like to thank all the students for their patience here. I think you will learn a lot, and these were the very practical subjects, the topics, and you need these topics because even if you become specialist, even if you become, because you need these topics day in and day out, especially when you are sitting in emergencies. All these topics, practical, there is a practical topic. You should know in and out of these topics. Only then, because even if you are not specialist in forensic medicine, you have to know it. There is no way out. You need not know, you are a other specialist, you need not know surgery. You are a medicine specialist, you need not know surgery. But you need to know forensic medicine in and out of it. And a lighter note, if my colleagues from medicine department they work hard and they know everything, forensic का काम हो जाए. और अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे, उनको ज़रा पोस्टमार्टम करोगे. So somebody has to work. अगर मुझे लगेगा कि मेरे कोई forensic में काम कम करे, this is lighter way. You should know the type of organoprocess specialist है. अगर आपको ट्रीटमेंट नहीं पता है, उसकी इंट्रिकेसीज नहीं पता है, ट्रीटमेंट तो चलो ठीक है, मोटा मोटा ट्रीटमेंट आपको सबको पता हो, और हम ये कोशिश करेंगे जब तक आप निदान बने, आपको ये चीज़ें पता हो, तभी आप निदान बने. क्योंकि these are the things which you should know in and out. तब तक आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते, स्पेशली when you deal with career, even late in the game, जैसे आपने करियर, लाइक जैसे आपने देखा वो जो प्रदेश में एक दिखाया था, रिसेंट वो बालापुर की देखा यूनिवर्सिटी वाले फीमेल डॉक्टर, उसका एक विक्टिम में हमने 2 फिंगर टेस्ट किया है, उसके लिए 10 लाख पे फाइन. वो कोई नहीं कहेगा कि आपको नहीं पता था, आई वाज इग्नोरेंट, यू शुड नो इट. So with these words, I will thank
everybody. I forget to name best persons and what is said. I would witness that who has come all the way from Punjab. Thank you. Thank you. I also seeing there the PG students are available. Okay. But Mr. Arjun, Dr. Arjun, are you available? PG students who are going to present. Good afternoon, sir. Dr. PG students, sir. Yes. Now you will start. Your time will be only 10 minutes. Good afternoon, respected faculty. मैं अपने ऊपर देता हूँ, आपके लिए बोल दूंगा, आपके इसके लिए बोल दूंगा, पढ़ के ना, हाँ? पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई है, ठीक है। All the HODs and faculty members are all these PGs and also the SDM is also there. So that's why they are busy here. So they will take 1 or 2 minutes more to join this conversation.
Good evening, respected faculty. I'm Dr. Ashwat. I'm final year PG student at Pt.JLNGMC&H. So today my poster presentation is regarding a vascular technique, and case of homicide where vascular technique is applied. So this is basically a rare case of compression of neck with the wooden handle of an axe to cause mechanical asphyxia, similar to that used for committing homicide using vascular technique. The introduction part. Mechanical asphyxia, a broad term in which enough external pressure is applied to the neck, chest or other areas of the body, or the body is positioned in such a way that respiration is difficult or impossible. Vascular technique, one strong bamboo or stick is placed across the back of neck and another across the front. Both the ends are tied with a rope and tightened due to which the victim is squeezed to death. Sometimes a stick is placed across the front of neck and a silent stand is put on each of the extreme ends. So, the case description in this case, a 77-year-old male was found dead in pool of blood in his home over the bed in his bedroom. As per police inquest papers, accused was son of the deceased. He was standing next to the dead body, having an axe with a long wooden handle in his hand. There was an altercation between the two, that is victim and the accused. The accused even tried to assault his mother, and the police was informed by her. The post-mortem findings. The dead body was of a male, 165 centimeters in length, of moderate build and moderately nourished, wearing light brown colored kurta, white colored vest, white colored pajama, and blue colored underwear. And all the clothes were bloodstained except the underwear. The deceased was lying on a wooden bed sheet, and another bed sheet was lying by the side of the body. Rider pockets was appreciated all over the body. Post-mortem staining was present over the back of the neck, front, and lower, except on the areas of contact pattern and was stress. Threats were present on the left. The description of injuries were as follows. A reddish colored bruise with a reddish parchment-like elevated area of 22 to 14 centimeters on front and both sides of neck and abdomen. The lower margin was just above the level of sternum and the upper margin was 5 centimeters below the tip of chin. The abraded area was 12 by 7 centimeters on front of neck. Multiple reddish abrasions on sides 0.8 to 0.2 centimeters to 1.1 to 0.2 centimeters were also present over the bruised area on front of neck. On dissection of the neck, subcutaneous tissue and the muscles are reduced. Blood infiltration was present in the abdominal area. Area around the trachea, glottis and epiglottis area were also complete. Bones and cartilage of neck including higher bone was intact. Later on, a bluish colored bruise measuring 5 to 3 centimeters was present on the left side of front of chest and 2 centimeters from the left. A blue colored bruise measuring 30 to 6 centimeters was present all around the left shoulder. Next, an inverted C-shaped puncture wound with 8 cut margins measuring 2.9 to 2.6 centimeters was present just related to the nose on left side of patient adjoining upper lip. Margins in the adjoining area was abraded. The maxilla bone in the knee was fractured. A punctured wound with 8 cut margins measuring 2.5 to 3 centimeters was present on the left side of the face, 1 centimeter below the number 1. And 2 centimeters below the underside. So these were the main injury factors present, and there were other multiple inconspicuous injuries also. The samples preserved in this case were visa and blood for chemical analysis, and later on when the article report was received from the blood alcohol concentration was 38.50 mg/. Blood on board was sent to protein and plasma. The clothes and 2 bed sheets all came were preserved and sent to office. Later on, the police brought the weapon of offense for subsequent appearance and the findings were as follows. On opening the parcel, it contained a 56 centimeters long axe with a heavy metallic end and a long wooden handle with some stained wood.
when you cross the road. This is a very important process. There must have been some kind of control issues which have led to this aggressive behavior of some people of the staff. There are numerous factors like social media, working organizations, which led to this type of behavior, and it should be addressed and acknowledged for the welfare. And these are the photos which are have for the time. One photo is the effects on the movement and the side forward. And the second photo is showing the completion magnitude on company of. Thank you. Now the session is open for discussion. Any questions, please? Have you finalized the dates? Have you given a final opinion in this case or not? Yes, sir. The final opinion was not correct. What was that? There is one of that in this case was law with the comparison of neck and chest, which was sufficiently for addressing already taken. Taking the person, how individual was directed in the consumer analysis as described. Any poison there were detected or not? No, sir. There was no poison. Okay, thank you so much. Any query from any other online or offline delegates? Yes, there are some questions. What do you want to say? The society is not developed. You have raised your hand. Then we are starting with the next, Dr. Arjun will present his oral presentation. And Dr. Arjun will share the presentation. Yes, sir. Okay. Good afternoon, all senior faculties, all respected all members, and my dear junior members. Today, myself, Dr. Aman Chauhan, junior resident in Department of Forensic Medicine, and Dr. Rajendra Prasad, Government Medical College, CHAMBA in Himachal Pradesh, is going to give an oral presentation on a topic, a rare case of poison due to venereal. First of all, the introduction. Poison may enter into the human body by several means that may be: first one, antral route; second one is parenteral route. In case of antral route, that is by mouth or by rectum, to be absorbed close to antral mucous membrane.
While in case of peripheral routes, that is by injection, which can be through any route, that is intradermal, intramuscular, intravenous, intraarterial, intraperitoneal, subcutaneous, or intraosseous. Poison, herbicides, pesticides, and rodenticides, etc. is very common nowadays, especially in the northern part of India due to their easy availability in the market. Such compounds are available in the boxes of farmers, persons in the agricultural sector, and using such compounds. Most of the time, the cases of poison to the hospitals or absorbed for oxygen or trees are organophosphates, organochloride compounds, aluminum phosphide poison, etc. In this other presentation, we will discuss number one about one of the rarest routes of poisoning, second, mindset of the disease to anti-black or repetitive act of suicide showing that positive mindset. Third one is importance of psychological autopsy in this type of case. In case description, this is the case of a 21-year-old male with history of attempt to suicide with oral intake of corrosive poison on date 17 August 2021. He developed picture of esophagus and was undergone laparotomy and a feeding uterostomach was placed in CT. Patient survived and was discharged from hospital with feeding uterostomach used in situ. Counseling by psychiatric department was also done. Then thereafter, on the date 22 June 2022, patient was brought to emergency at CHUME in unconscious state by his brother and mother. Kerosene-like smell was coming from clothes and from feeding uterostomach tube. Bottle of organophosphate and pesticide was recovered from patient. Patient was in unconscious state and vital blood pulse 130 beats per minute, blood pressure 116 by 78 mm of mercury, and peripheral oxygen concentration was 96%. While electric lavage was not done due to ecophagian friction formation. The patient was referred to Dr. C.M.E, were symptomatically treated and was again discharged after psychiatric counseling. But thereafter, patient again consumed pesticide with feeding uterostomach tube on date 5th November 2022. Taken to first referral unit, where medical legal report was issued, new treatment given, and then referred to Dr. C.M.E, were admitted and died on 6 November 2022. Postmortem examination was conducted on date 7 November 2022 at 2:15 p.m. Postmortem findings, it was the dead body of a male, 155 cm in length, thin build and malnourished. Tiger motifs was present all over the body except over the facial and neck muscles. Postmortem scanning was bluish in color, was present over the back of neck, trunk and lower limbs except on the area of contact flattening and was fixed. Multiple parallel wheels channel were present over front and left forearm. अच्छा तेरे चैनल में आ रहा है On dissection, both lungs were intact and congested. Blood-thin fluid was coming out from both his lungs. Stomach contained about 20 ml of brownish blood fluid. The photograph of stomach was in the state. All other organs were clean. Usually bladder was empty. A circular-shaped uterostomach wound with regular markings measuring 0.4 into 0.4 cm was present over left side of abdomen, 19 cm below the left nipple. Yellowish green fluid was coming out from the uterostomach wound, which was communicating with the jejunal area. The photograph was suggested that no abnormal smell was present. And this is a picture showing चैनल का लिंक भेज दी मैं सब्सक्राइब कर लूँगा this is a picture showing 0.4 into 0.4 cm circular uterostomach bone 19 cm below left nipple over left abdominal area, and this wound is communicating with the jejunal area of the small intestine. Second picture. Samples preserved
Viscera and blood were preserved and sent for chemical analysis to Regional Forensic Science Laboratory. Then RFSL report was Amitra as a pesticide was detected in the blood and viscera of the disease. In conclusion, this is one of the rarest documented route of intake of poisoning that by feeding the community, the disease had tried to end his life multiple times. There was a wide variation of psychiatric morbidity among young persons and in other settings, main cause is stressful life of youth. In this type of case, psychiatric counseling plays an important role for prevention of repeated suicidal attempts. Psychological autopsy may also play an important role in this investigation purpose and also prevent further suicidal death in the family. Although there was no history of poison fed by relatives or family members in police inquest papers or information given by relatives, but it is difficult to ascertain the exact information of the situation around death. Medical review, this situation could also occur in case of homicidal poisoning. Thank you. So there was a rare case of feeding, nice topic you have selected, and it is a very rare one. From medicine department and chemistry medicine. So the surgeon is available, he can comment it more. So thank you very much, Chicken. Any queries from the online or offline delegates? Very much welcome. Let's start. You have raised hand. What do you want to ask? Siddharth Kalia. Okay, thank you so much. Sir. Okay. Thank you. You have given the time from this busy schedule. चलो ठीक है मैं ऐसे ही पूछना था तो एक बड़ा ही है ओके थैंक यू बेसिकली नर्सिंग स्टाफ ने यूनिवर्सिटी में ट्यूब पर जर्नी की थी नर्सिंग स्टाफ ने जब डेथ सर्टिफिकेट लिखने में जब स्टार्टेड द यूनिवर्सिटी Yes, sir. Otherwise, that could have been a good evidence to substantiate your everything. Yes, sir. Yes, sir. That is a very rare case. I haven't encountered. So thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. With this, we are also closing this session. Thank you so much, sir. I would like to invite all the faculty members to please felicitate our chairpersons.
I think I will talk to students. Knowledge is power. You all know that. And when we share the knowledge, we are multiplying the power. And standing in the institute, in a teaching institute, from day one of your medical college, you will have many experiences, clinical experiences with your patients, like me during my graduation, post-graduation, senior residency, consultancy. My aim is to share it, to disseminate it to my juniors so that they can learn from my shortcomings, from my complications or from my good goings. So this is the best forum. The CME and the conference is the best forum to share your knowledge, to share your wisdom, to share the power and it is multiplied. तो जिंदगी में कभी भी कुछ सीखा है, कुछ अच्छा सीखा है, उसको अपने तक नहीं रखना कि वो मेरे से सीख लेगा, वो ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, वो नहीं, गलत है वो। जितना ज़्यादा सिखाओगे, जितना ज़्यादा समझाओगे, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस शेयर करोगे, उतना ही वो पावर जो आपकी है वो डिसेमिनेट होगी, ठीक है। एंड शेयरिंग ऑफ द नॉलेज इज द बेस्ट ट्रीट। आपने समोसा खाया, चाय पी, अल्टीमेटली वो बाहर जाने वाला है। जो आपके दिमाग में गया, और जैसे डॉक्टर परमेश ने बताया, सर ने बताई ओपीसी पॉइजनिंग बड़े सालों बाद पढ़ी मैंने, पर कुछ चीज़ें हैं मेरे दिमाग में बस गई हैं। एंटीडोट है, क्या नहीं करना है, गैस्ट्रिक इलाज कब नहीं करना है, अगर उसको पेशेंट को देखना है तो सेल्फ प्रोटेक्टिव कोट पहन के देखना है। सो दीज थिंग्स, कल को किसी चीज़ को मैं बताऊंगा तो आई विल शेयर इट। सो द नॉलेज इज द बेस्ट ट्रीट एंड आई वांट टू थैंक डॉक्टर प्रदीप सर, they have given us the best treat. I would like to thank Pankaj sir, Dr. Vinod and Dr. Parmesh for giving us the treat and insights. And I will recommend you and all of you कि अपनी एक डायरी बनाओ, अपने एक नोट्स बनाओ। There are vast cases here, इतने केसेस यहाँ मिलेंगे आपको, कहीं नहीं मिलेंगे। उसको लिखो और अच्छे से काम करो। So thank you very much and it was my honor to be your organizing secretary. Thank you so much, sir, for your kind words. Now I request Dr. R.K. Goria, sir, President SPIC, to please say a few words. Dear Organizing Chairman, Dr. Pradeep Singh, Dr. Pankaj, Organizing Secretary, members of the Organizing Committee of the celebration of the President Medicine Day, and C.M.E. of Society for Prevention of Injuries and Corporal Punishment. On the occasion of that kids song, ladies, gentlemen, distinguished guests, faculty members and dear students, and Professor Muhammad Masood from Pakistan. I am before you today with a profound sense of honor and privilege to be invited to speak at this prestigious event of celebrated function of this C.M.E. As we gather here, I am reminded of the countless hours of hard work, dedication, and perseverance that has brought us to this moment of celebration. First and foremost, I extend my heartiest congratulations to Dr. Pradeep Singh, who is a tireless worker, a very good teacher, and a star heart, and a very good leader, and I have seen him organizing so many CMEs and conferences year after year, and every time it is more successful than the previous one. So I congratulate you, Dr. Pradeep, your organizing secretary, and your entire team for all this heroic work. I will also like to congratulate the students who are working hard to complete their academic journey. This day marks a significant milestone in your life, and it is a testament to your commitment to learning and personal growth. Your accomplishments deserve applause, and I am confident that you will continue to achieve greatness in all your future endeavors, and will continue to learn like this from the future CMEs and conferences. I would like to take a moment to acknowledge the exceptional efforts of the faculty and staff who have guided and nurtured this campaign. Education is the foundation upon which the societies are built, and the role of the educators cannot be overstated. Thank you for your dedication and commitment to shaping the leaders of the tomorrow. I thank all the resource persons, all
who have made the efforts to give some very good things to our students to learn from these topics. Today's event is not just about individual achievements, it is celebration of the collective spirit that thrives in the institute. The bonds forged there, the friendship made, and the experience shared will shape your lives in ways you may not can fully comprehend. As you step out into the world, remember to cherish these connections and support one another. While we celebrate the moment of success, we must also recognize the challenges that lie ahead. Our world is rapidly evolving, and with it comes a myriad of global issues from climate change to social inequality. As the leaders of tomorrow, it is your responsibility to confront these challenges head-on and work towards building a more just and sustainable future. Embrace innovations, think critically, and foster a spirit of collaboration. The problems we face today require collective solutions that transcend borders and ideologies. There are health issues among students, especially issues of mental health due to the stress. Stress may be due to achieving in studies, due to corporal punishment, or bullying behavior by the other students. Stress may lead to anxiety, depression, and other health issues. Sometimes stress may be so strong, leading to suicide. We all must be careful and always seek help from parents, teachers, friends, and medical professionals. These issues are not considered stigma anymore. Please remember this. Whenever there is a stress, there are people around you. You must talk to them. There are health professionals available. They are there. You must consult them if any of these such problems you or any of your friends faces in life. I urge you to be the agents of positive change, to be compassionate and empathetic, and to always strive for excellence in whatever you pursue. Remember that success is not only measured by individual achievements, but also by the impact we have on others and the world around us. As you excel in your chosen field, consider how you can give back to society and uplift those who are less fortunate in the society. Be role models, be mentors, and be beacons of hope for others to follow. Lastly, never forget the value of lifelong learning. Education does not end here. It is a continuous journey of discovery and growth. Keep an open mind, embrace new ideas, and adapt to the ever-changing landscape of knowledge. Once again, congratulations to all of you, and my best wishes to all the students for being bright and promising future. Thank you to all the faculty, staff members, and everyone involved in making this C.M.E. a big success. Jai Hind. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your kind words. Now I would like to ask Dr. Mohammad Maqsood, sir, from Pakistan, if you would like to share a few words with the audience. Sir. He seems to be offline at this time. He is with us, sir. That Mohammad Maqsood is with us. I am seeing he is present online. Okay. Thanks to all of you being a part of the C.M.E. I will like to thank you all, especially Dr. Pankaj Gupta sir. हमारे साथी जो हैं पड़ोसी भी है साढ़े, ठीक है ना, उतों के HOD स्किन के आगे ने साहब, ठीक है ना, Dr. Joginder Singh from he is coming especially for this occasion from Shahpur, Punjab, and Dr. Daisy. Dr. Maqsood is online now. Dr. Mohammed sir. Sir, unmute करो sir, unmute करो. Please unmute yourself, Dr. Mohammed. Sir, please unmute yourself, Dr. Mohammed. At the bottom, there is a speaker. You can check on that at the bottom. At the bottom, if there are so many icons. You can just there is the first one. Press that, you will be unmuted.
Mohammed sir, you can unmute yourself. Not we are unable to do it. Sir, just click on. At the bottom of screen, sir, there is a button. You can just press that with the microphone. Please, sir, you will try to join again. Now, leave this meeting and try to join again. Probably he is not able to do. He has not left the meeting. He won't be able. Okay, you can continue. If he joins, you can give him time. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. So I would like to say thanks to my dear students, which they have given their wholehearted, spirited efforts, especially हमारे एंकर जो हैं जी, डेकोरेशन वाले हैं, ये YouTube लाइव वाले हैं हनी जी, और हमारे फीडबैक वाले भी हैं, कुछ खड़े हुए हैं जी। मतलब मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड ये था, फीडबैक लेना ही लेना है सर, किसी को नहीं छोड़ना, बल्कि फॉर्म कम हो गए हमारे, फीडबैक वगैरह पूरे हैं। ओके जी, and all these who have made this decoration and made this viable moment, मैं तो नाम भी गया हूँ, ठीक है ना, हमारे कुछ नेशनल एंथम वाले बच्चे भी हैं, ठीक है ना, कोई बोलेंगे कि नेशनल सॉन्ग्स वाले भी हैं, ठीक है ना, so they all have contributed, and हमारे जो CR जो हैं जी, बहुत मेहनत की है लड़की ने, ठीक है ना, ये हमारी गिरीश जी है, मतलब ये चलते हम 2-3 दिन से परेशान कर रहे हैं, ये कर लो तुम, ये कर लो, ठीक है ना, whatever will be, ठीक है ना, at your end make it at your own level, ठीक है ना. So they have done the maximum efforts, and we are also thankful to all of you, and we will try to meet you again, ठीक है ना, at the earliest, ठीक है ना. So thanks to all of you. With this we are dispersing and leaving you all and saying this: hip hip hooray, hip hip hooray. Thank you. Now I request everyone to please stand on your respective places for national anthem.
शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 With this, the CME is closed. See you all again at the earliest. Thank you. Student delegates who are here, we have got a group photography. Rest can leave if they want. Attendance ले लो ना। जैसे निकलते हैं लेते हैं ना। हमारे delegates हैं निकल जाए काम कोई और एक आप photograph। एक पता क्या था यहाँ चेयर